नमस्कार सभी का। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हमारा गोल्डन एपिसोड है 50 वेबिनार। फ्रॉम लास्ट 2 years वी आर वर्किंग ऑन दिस वेबिनार सीरीज। 2021 में हमने ये शुरू किया था। इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जो जल बिरादरी की टीम है महाराष्ट्र की, इन कोरोना हमारे टीम ने आओ नदी को जाने ऐसे वेबिनार शुरू किए। लगभग 44 एक्सपर्ट्स को बुलाया पूरे दुनिया से। और उसके बाद में ऐसे तय हुआ कि 2021 में फिजिकल यात्रा निकाले महाराष्ट्र में, फ्रॉम नासिक त्र्यंबकेश्वर टू वर्धा। लेकिन कोरोना का सेकंड वेव आया, उसमें वो फिजिकल यात्रा कैंसिल हो गई। फिर हमारे टीम ने डिसाइड किया कि हम ये सारा जो फिजिकल यात्रा निकालने वाले थे वैसे ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू करते हैं। तो हमारे टीम ने 2021 में नासिक डिस्ट्रिक्ट से ऑनलाइन संवाद यात्रा शुरू की। नासिक के बाद जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, ऐसे करते करते जुलाई 2022 तक पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों की यात्रा कंप्लीट की। और जब नासिक, धुलिया, जलगांव ऐसे तीनों डिस्ट्रिक्ट का यात्रा कंप्लीट हुआ, तो हमारे टीम ने डिसाइड किया कि जैसे आओ नदी को जाने डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू है, वैसे आओ तापी नदी को जाने ऐसे वेबिनार्स हम शुरू करते हैं। तो हमारे टीम ने, जो भी हमारी टीम है पूरी आओ तापी नदी को जाने में, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। 2021 में पहला वेबिनार लिया मॉडल विलेज गाड़ेगांव, जो हमारे यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में विलेज बनाया हुआ है कि जिसमें पीपल पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट, एनजीओ इन सब मिलाकर अच्छा विलेज डेवलप किया है। तो इसके जो भी गांव वाले हैं, एनजीओ है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, इन सबको हमने इनवाइट किया था। उनसे ये शुरुआत हुआ। और ऐसे करते करते 49 वेबिनार्स कंप्लीट हुए। लास्ट हमने डिसाइड किया कि हर महीने के दूसरे और चौथे संडे को हम ये वेबिनार कंडक्ट। एक्चुअली मेरा कनेक्शन गया था, मैं 1 ही मिनट शेयर करता हूँ। तो 2021 में हमने जब ये शुरू किया वेबिनार्स, तो हमें बताने में खुशी होगी कि तीनों राज्यों से, जहाँ से तापी का उद्गम है और तापी का संगम है, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तीनों राज्यों से आज तक 49 वेबिनार में 100 से भी ज्यादा स्पीकर्स, महानुभाव, जिनका खुद का एक्सपीरियंस उनके फील्ड में, किसी का 10 साल का है, किसी के 20 साल का, 40 सालों का, ऐसे सारे लोग आ गए। और जिनका हर एक का कॉर्नर अलग अलग है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है उसका पेन समझकर, वैसे अपना ही कार्य करते हुए ये जो भी महानुभाव आए, उन्होंने अपने ही लोकल जो भी अवेलेबिलिटी थी वहां से खुद को एक नया प्रोजेक्ट बनाया। और वो प्रोजेक्ट हेल्पफुल हो कैसे सोसाइटी के लिए, इसमें काम किया। ऐसे सारे स्पीकर्स। फिर जैसे एक कमल वाले बाबा थे, हनी बीज वाले थे, और फार्मिंग में योगिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग, ऐसे अलग अलग टॉपिक कि जो हमारे 4 टॉपिक है, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इससे रिलेटेड आज तक 100 से भी ज्यादा महानुभाव यहाँ पर आ चुके हैं। और इन्होंने अपना जो भी कार्य है हमारे यहाँ पे रखा है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के जो हमारे स्पीकर है निखिल शाह सर, इनका परिचय करवाने के लिए सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ। सुनीता दीदी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे भी आज खुशी हो रही है कि मैं आज के अपने स्वर्ण महोत्सवी इस वेबिनार में उपस्थित हूँ। मैं भी आज के हमारे जो पहले वक्ता है उनका परिचय देने जा रही हूँ। निखिल संजय शाह। Nikhil Sanjay Shah is a researcher, architect, and an urban designer.
His research interests are in the domain of urban design, indigenous studies, the urbanism of Himalayan settlers, urban art, agroecology, feminism, heritage conservation, दीदी आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है दीदी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेंडर स्टडीज, कम्युनिटी. आ रही है क्या अभी? हाँ अभी क्लियर है. हेलो. येते आता. Gender studies, community participation, and earth architecture. He was previously associated with the Smart Cities mission as an India Smart Cities Fellow, and they developed urban water resilience platform for the Smart City Surat. Prior to that, he was worked with people, a research fellow where he was working on the Nagar Nadi Research Fellowship in the city region of Surat, mapping the trajectory of development projects and its impact on the local communities. He was also a research fellow with SVNIT Surat and Salford University, UK, working on IT Indian Heritage Platform project, and a research fellow at UNESCO Delhi, working on the old city core of Surat. He was a recipient of ISO CARP 2020 award for his graduation thesis, Ecological Urban Common, Augmenting Climatic and Social Resilience Surat, and Shriya Anand Award from Landscape Foundation India for his work minute and empathetic narrative exploring the historic present of Ashwini Kumar in the city of Surat. He plans to work on the urban water plan for the coastal cities of the Indian subcontinent on research on desert issues, exploring multidisciplinary pedagogical frameworks to involve co-learning process. He holds a master's in urban design from the School of Planning and Architecture, Delhi. Thank you. Thank you, धन्यवाद Sunita दीदी. ji. मैं निखिल शाह सर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपना स्पीच शुरू कर. All right, yeah. Thank you, Vishal ji, and thank you, Sunita ji. Am I audible? Yes sir. All right, yeah. Thank you, Dhanyavad. I'll also just share my screen and आप बता सकते हैं. You could just let me know if it's visible or not. Yes, it's visible. Just yes. Now it's in a slideshow mode. Okay, All you right, can all continue. right. All right, sure. Thank you. Yeah, firstly, yeah, good morning, good afternoon, good evening, from whichever part of the world you guys are joining in, and specifically to everyone जो grassroots level पे India में काम कर रहे हैं in the domain of ecology, environment, and also water conservation at large. जैसे मेरा interaction हुआ विशाल जी से, सुनीता जी and other people in this group. So firstly, thank you for the invitation and happy to be a part of this forum. So आज का जो हमारा जो presentation है, that is basically हमारे last 10 साल का, I would say 10 साल का जो
रिसर्च है इन मल्टीपल कैपेसिटीज जो हमने सूरत में एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट किया। जब हम वहाँ आर्किटेक्चर पढ़ते थे, आई यूज्ड टू गो एंड सिट अराउंड द रिवर बैंक क्वाइट अ लॉट। और जिस तरीके से सूरत में अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमने काफ़ी बार रिवर को एक बहुत ग्लोरियस फ्री फ्लोइंग एंटिटी से एक एकदम सूखी एंड पेरिनियल जो रिवर है वहाँ से एकदम सूखी और डेजर्टेड काइंड ऑफ रिवर के फॉर्म में हमने बदलते देखा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा स्पेशलाइजेशन है इन द डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिज़ाइन, सो बेसिकली हम देखते हैं कि कैसे अर्बन प्रोसेसेस हैं और शहरीकरण जो हमारा हो रहा है तो वो कैसे होना चाहिए, सो दैट हम जो वाटर सिस्टम्स हैं, बाकी स्पीशीज का हैबिटेट है, वो कैसे मिनिमली हम बेसिकली इम्पैक्ट करें या फिर डिस्ट्रॉय करें, जैसे हम आजकल देख रहे हैं। दूसरे तबके में हम जब हमारा मास्टर्स कर रहे थे अर्बन डिज़ाइन में, तो हमारा जो मास्टर्स का थीसिस प्रोजेक्ट था वो भी इकोलॉजिकल अर्बन कॉमन्स पे था, जिसका अर्थ है कि जैसे कि हम कॉमन्स की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली काफ़ी सारी जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उस पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल का ओनरशिप नहीं होता था। ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज वर लुक्ड एट एज कॉमन्स, और वो पूरी कम्युनिटी का एक एसोसिएशन होता था इन सॉर्ट ऑफ यूजिंग इट, सस्टेनिंग इट एंड ऑल्सो sharing it together. बट जैसे लास्ट 30 इयर्स में हमने जिस तरीके से काफ़ी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो शिफ्ट हो रहा है और जो हमने बदलते देखा है, और पोस्ट नियो लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड इस पीरियड में जो हमने ग्रोथ देखा, दैट ग्रोथ हैज कम आल्सो एट अ ह्यूज कॉस्ट, एंड cost is something which we have not we'll never be able to sort of calculate it financially given the current economic model, but those costs are very, very visible in terms of depletion of our water resources, pollution in our rivers, and टू द डिग्री के काफ़ी जगह पे ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन स्पीशीज के सर्वाइवल पे भी सवाल उठे। इस लेवल का डिवास्टेशन वी हैव ऑब्जर्व्ड अनफोल्डिंग इन द लास्ट 30 years. एंड फाइनली जो थर्ड स्टेज में जहां हम तापी नदी के ऊपर रिसर्च में एसोसिएट हुए, वो दैट वाज थ्रू पीपल्स रिसोर्स सेंटर, जो सुनीता जी ने बात किया। सो बेसिकली दैट वाज पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप कॉल्ड नगर नदी रिसर्च फेलोशिप, एंड एज पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप हम इंडिया में 5 रिवर्स का स्टडी कर रहे थे, और 5 सिटीज में, जिसमें सूरत, इंदौर, मुंबई, पुणे और वाराणसी थे। और स्पेसिफिकली जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट जब बना, उसके बाद उस टाइप का जो मॉडल है या फिर उस टाइप का जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पूरे नेशन के लिए एक हिसाब से एस्पिरेशन बना है, जहाँ पे काफी सारे शहरों में अब उनको रिवर फ्रंट्स बनाने का मतलब एस्पिरेशन भी है, और टू अ ग्रेट डिग्री देयर इज अ पॉलिटिकल विल एज वेल। बट वो रिवर फ्रंट कैसा होना चाहिए, उसमें प्रोसेस क्या होना चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का होना चाहिए, तो ये हम उस डायरेक्शन में आज हम चर्चा करेंगे। और हम जो प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर है, इट विल बी लाइक पहले हम लार्जर सिस्टम्स और सिनेरियोज की बात करेंगे, वहाँ से उसके बाद हम सूरत का जो पार्ट है, जहाँ तापी रिवर सूरत में से फ्लो होती है, स्पेसिफिकली सूरत सिटी रीजन की हम बात करेंगे। और फाइनली हम लास्ट स्टेज में वी विल सॉर्ट ऑफ लुक एट कि हमें इन फ्यूचर जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए बेसिकली।
So that is the larger structure of the presentation. So today we'll be, with that, I would sort of begin the presentation, which is on Anthropocene to Ecocene, the development chronicles of Surat, which will be looking at how historically the urban transformations have happened in the city of Surat, and which have led us to the stage where our thoughts, our ideas, and systems in which we approach urban processes and transformation are very, very anthropocentric. And we do not look at a larger sort of biodiversity or larger sort of ecological web of life. And that is where we need to mark that transition from the Anthropocene to Ecocene. And specifically, जब हम इंडिया की बात करें तो हम एक ecological civilization है जहाँ पे since eons we have been talking about permanence at the sort of scale of 7th generation. So how do we reinstate and strengthen our own ecological roots and foundations is what we would be looking into. So to begin this dialogue, basically, I was part of this collective called Gesturing Towards Decolonial Futures, और हम ये discover करने का try कर रहे थे कि current जो systems हैं, the larger geopolitical हमारा जो scenario है, या फिर उसे हमें एक abstract way में अगर जो बताना हो तो वो क्या हो सकता है. And that is where like our collective, through a larger discourse and discussion deliberation, we came to realize that हमारा जो last 300 years and specifically last 30 years का जो construct of the world है और जिसे हम world view कह सकते हैं, that is essentially based on a few primary parameters, such as one, the idea of separability and the idea of hierarchy. So when we talk about separability, essentially it's that worldview or a mindset where we believe or we sort of assume our superiority as a species onto the other species, and this construct, which started from a very mechanistic and reductionist worldview, started to become the dominant force as well. So ये जो एक separability है, that's the foundation of this house. ये जो घर है, इसे हम house of modernity कहते हैं, और its foundation is something which is based on separability. And the walls of these are essentially based on the idea of enlightenment, humanism, and nation state. To put it simply, जैसे हम ecological systems या river की बात करें तो उसे आप कभी भी एक boundary या border के terms में नहीं देख सकते हैं. It is something which is a continuous system. और इसके जो implications हैं, ये जो world view या ये mindset के जो implications हैं on our real world, that is something which we are experiencing at multiple scales in our sort of immediate lives, and at the larger sort of nationwide scale and the global scale as well. And finally, the roof of this particular house is made up of global capitalism, जो financial और या फिर economic model है currently, जो पूरा काफी सारी चीजें shape कर रहा है in the present times. So that is something which is what is shaping this house of modernity or the worldview at large. Of our last 30 years and 300 years in specific. And to set off the conversation, I would say that the current contemporary civilization which we are living through is a crisis of fragmentation. Fragmentation of thought, fragmentation of conception, as well as fragmentation of actions. And that is something which is very, very visible in all our sort of thoughts and the way we approach the idea of development. जैसे कि हम last 30 years में बात करें तो development हम सोचते हैं कि if we chase GDP and if our GDP sort of goes up, then essentially we will be a more developed nation. But हमें वो development model को itself question करना है, and वो हम कैसे calculate कर रहे हैं, that is something which we need to
very critically look into, because if we add all the economic sort of gain which we've had in terms of GDP, and add the destruction of all the rivers, all the water systems, and all the wells to that, which is almost 10-folds of the current GDP gains, then we would be having a very negative growth as well. And that is where ये जो house of modernity या फिर ये जो world view है या construct है, this is something which is falling apart. Falling apart in its own conception. And that is where, like, if we look at further imaginations of this house of modernity, then essentially ये जो world view हमने construct किया है, this house is the house which exceeds the limits of the planet. So currently अगर जो हमारी current lifestyle कह लो या फिर development paradigm जो है हमारा, उसे हम यही similar pace पे अगर जो हमें सबको provide करना हो, destroying all the diversity of the world which already exists all around, we would require almost 6 planets to sort of afford that kind of resource consumption and afford that kind of a lifestyle. So that is where the first premise being a house which is exceeding the limits of the planet, the house which is subsidized and maintained by violence. And essentially colonization was a phase जहाँ पे एक nation जो था या फिर एक particular community group, they assume their superiority onto the others. But in the present times, what we have seen in the post-independence scenario in India, essentially there was a transfer of power, but we aren't really very, very independent in our thoughts, in our actions, and the way we are approaching our development paradigms. And we can see people in our own lands, if you want to look at it from the nation boundaries. Essentially, we are colonizing our own people as well. And that is where in the next frame, what you can see, if you look at the floors of this house of modernity, essentially there's a sort of social mobility ladder which divides the north and south, the developing or developed nations, and the ones which are considered underdeveloped, but they have the most sophisticated ways of living within the ecological system and limits of their local ecosystems and the planetary boundaries. And that is where we see there is a creation of north of north, north of south. There's a social mobility ladder, and there is south of north, and further there's south of south, which is how our current sort of house of modernity is shaping a false promise of a universal middle class. And from there, when we move on further, essentially this house of modernity जो हमने देखा, and as we realize कि ये world view जो है, that itself is something which is falling apart, and we require decolonization and looking at decolonial imaginations and diverse ways of living which can address these things. So, and this house of modernity, which is like a construct or a trap, in itself is leading to multiple crises. जो हमारी social crisis है, economic crisis है, ecological, political और mental health crisis है, या फिर जो हमारी change instability है of rights. So all of these are a result of this very, very conception of this house of modernity. So with that, I would move on specifically to the city of Surat. And again, when we talk about the city of Surat, as I already mentioned, we cannot look at rivers in terms of its very, very geographical boundaries, या फिर सूरत की river, सूरत का stretch के बारे में हम बात करेंगे, but we cannot really look at rivers in terms of boundaries. And that is where we have to look at how a particular ecological system is functioning at a regional scale. So specifically talking about the city of Surat now, so essentially it's a coastal city on the western coast of India, and it is vulnerable to
extreme climate events such as flooding, tidal surge, sea level rise, and flash floods. And simultaneously, it's one of the largest, ninth largest city in India and fourth fastest growing economy globally. But at the same time, there has been an increasing flood risk exposure and vulnerability which the city is facing. And 2006 May, Surat faced a very massive flood, which was also in a way a man-made or human-made mismanagement-induced sort of flood. And with that, in the current times, there is definitely an increased pressure on natural resources and a dwindling ecological balance. So, अगर जो हम सूरत के urbanization या urban processes की बात करें, so essentially Surat began as a multi-nodal or multi-core sort of city. So it was never like a city which grew in a very planned manner per se, but it grew in a very aggregated manner. So this is the oldest core of the city of Surat, which is Gopipura. And apart from that, this particular area, which is Ashwini Kumar and Randir, if you look at, so all of these settlements or all of these pockets of settlements, they were sort of sited in a very ecologically sensitive manner for the fact that people who built Malik Gopi, who was one of the traders who set up Gopi Talao, he was one of the persons who started this particular settlement called Gopipura. But when the settlement began, the response was कि पहले हम एक natural एक man-made lake बनाएंगे वहाँ पे, which is a very natural response to the ecological system of the city. And then this settlement sort of grew around this particular lake. And likewise, अगर जो आप अश्विनी कुमार area देखेंगे या फिर रांदेर और सुवाली या बाकी सारे areas देखेंगे, so those were sort of sited in very deep synergy and understanding of how ecological systems were. And then on came the next stage in the development paradigms of the city of Surat, which was more of a defensive mode, whereby now we start to see fortification walls as well as raised embankments which start to come up along the river edges. So अगर जो आप ये वाला इमेज देखेंगे, so we can see that जो आपका river edge है, along the river edge itself there was an embankment which was made. Definitely it was still much more public. वहाँ पे काफी सारे gardens हैं, temples हैं, market precincts हैं, temporal market precincts हैं, so all of those things started occurring there. But still it shifted from a very natural response to a defensive response. And then came the next stage in the history of the city, जहाँ पे वो जो response है from natural to defensive, it moved to manipulation plus defensive, जहाँ पे Okai Dam was built in the year of 1972, and further on 1995 में Veer-Kam Causeway बनाया गया in the city of Surat. And when the Veer-Kam Causeway was built, essentially the river swelled up. जैसे आप उकाई डैम देखेंगे, तो आप as soon as you dam this particular river, the upper catchment of the river, it sort of starts to swell up. And the same thing happened with the city of Surat as well. And in the year 2006, as I already mentioned, because of this mismanagement जो हुआ था, there was a flood which occurred, which not only took away many lives, but at the same time it devastated a lot of agricultural sort of fields, cattle, and much more. But certainly हमने जो 2006 में जो mistake हुआ था, which costed us huge in terms of economy, life, and other losses, we have not really learned from those mistakes.
given that currently जो city में say riverfront development के proposals हैं या बाकी proposals हैं which we'll be looking up to in subsequent slides, they do not essentially look at the lessons which we need to learn from the 2006 floods in specific. So that is where the need to adapt emerges from in the city of Surat. So now, specifically when we look at the ecological systems of which sort of flow through in the city of Surat, there it comprises of rivers, it comprises of wetlands, it comprises of the coast and multiple interconnected canals as well as water channels and streams. So it's a very, very ecologically rich city, which is the city of Surat. And to give a geographical sense of it, essentially through the center of the city, we have River Tapi, which flows through it. And apart from that, there is another river which we sort of choose to regard as a step river of the city, or a river where all the industrial pollution, effluent, and discharge can be dumped into, which is the Mendola River, which culminates into the Arabian Sea eventually, before which there are multiple wetlands जो आप देख सकते हैं in the southwest zone, जहाँ पे आज भी there are a lot of communities which depend on the shrimp farm, which is again ecologically it's something to be questioned as well, but again, that's how the ecological sort of network of the city of Surat is. And apart from that, we have multiple sort of canals and water channels and streams, and very important historical lakes, ponds, and wetlands. And moving on further, जैसे हम city का development trajectory देख रहे हैं with regards to master planning and with regards to also the town planning model, which has been used as a planning mechanism in the city of Surat. Essentially, it does not look at ecological systems as an integrated whole. So while the master plan of the city of Surat accounts for developing concentric ring roads, continuous mobility corridors, cable-stayed bridges, and a web of flyovers, as the city is infamously known as the city of flyovers, to navigate across in public and private automobiles. This entire model of master planning leaves no room to for a continuous and interconnected water system, both natural and human-made, a continuous ecological corridor, and a resilient cohabitation, being an integral part of the ecological web of life and the natural world at large. So that is something which is one of the biggest issues which we are currently facing in the city of Surat. And with the future projections, with the sea level rise, which is also a global phenomena, and the development trajectory which we have observed specifically in the last 30 years, we would be facing even very, very severe challenges in sort of historical projections. So with that, हम सूरत के अलग-अलग sort of points पे हम जाएंगे अब, और हम देखेंगे how river मतलब river and water systems किस तरीके से मतलब ट्वीक किए गए हैं, या फिर उनकी कंडीशन, उनकी करंट स्थिति क्या है, और हिस्टोरिकली जो हमने डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी में जो हमने डिसीजंस लिए हैं, हाउ दे आर लीडिंग टू दीज पर्टिकुलर सिनेरियो. सो जैसे हमने बताया कि वियरकम कॉजवे बनाया गया था इन 2006 में. The massive flood which the city faced, essentially after that our response should have been to adapt to all of these natural systems. How do we create a room for water, and how do we create room for the continuous flow of the water? But against that, what our entire planning model started to do is to create embankments along the river edge, and that is something which
has been immensely destroying the historical fabric of the city as well. So आप ये जो पार्ट देख रहे हैं अश्विनी कुमार एरिया, तो यहाँ पे काफी सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, जैसे कि वैष्णव महाप्रभु जी बैठक हो गई, उसके अलावा वैद्यराज ओवारा हो गया, और एक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्रीसिंक्ट है कॉल त्रण पान्नू वार्ड, जिसका महाभारत में भी साइटेशन है। तो ये वाला पार्ट ऑफ द सिटी जो है, बिकॉज हमने एक कॉजवे बनाया, इसेंशियली हमने जो एक फ्री फ्लोइंग रिवर था उसे हमने वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ टैंक बेसिकली। एंड जैसे इन द मॉनसून सीजन एंड इवन जब उकई डैम से पानी रिलीज होता है, तो ये पार्ट ऑफ द रिवर जो है वो काफी स्वेल अप हो जाता है। एंड उसके चलते जो ये सारे सेटलमेंट्स थे, जैसे कि ये महाप्रभु जी बैठक का जो आप ये घाट देख रहे हैं, जो यहाँ पे पहले एक घाट हुआ करता था, तो अभी यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट वॉल बनाया गया है। एंड जो सेटलमेंट्स हैं जो नदी के किनारे हैं बिल्कुल, उनका भी कनेक्शन विद द रिवर, वो रिवर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और मतलब आपको पूरा ये जो एम्बैंकमेंट है ये क्रॉस करके फिर आपको रिवर को एक्सेस करना पड़ता है। एंड काफी टाइम्स ऑफ द ईयर आप जब देखेंगे तो आप डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि यहाँ पे वाटर हयासिंथ का काफी जो जल कुंभी गुजराती में बोलते हैं, तो उसका भी काफी एक बड़ा प्रॉब्लम या इशू जो है। एंड दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो एक सिम्टम है कि मतलब अगर जो हमारे रिवर्स की हेल्थ या वाटर सिस्टम्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो दैट इज अ सिम्टम के वाटर hyacinth is sort of starts to grow around. And what we start to realize is that it grows, it's an invasive species, and काफी extent तक it has started to cover up the water bodies. So and ये जो है ये वैद्यराज ओवारा जो हुआ करता था पहले, उसके along embankments यहाँ पे बन चुके हैं। Further as we move down, we see Katargam area, which in which what we can observe is तो कि हम river फ्रंट तो बनाने का ट्राई कर रहे हैं रिवर एजेस का, बट एसेंशियली देयर इज नो रिवर लेफ्ट। एज वी मूव ऑन फर्दर, जो रिवर है वो एक बहुत छोटा, इट्स ऑलमोस्ट टर्न्ड इनटू अ ट्रिकल। एंड फर्दर ऑन व्हेन वी look at this stretch of the river causeway, so there is a stark sort of contrast which one can observe. And this sort of way of approaching our rivers and water systems is the ultimate sort of domination of human species onto the natural world and ecological flow and the web of life at large as well. So moving on further, so river is essentially flowing at the mercy of us as humans. And so hamara, like if I talk about my childhood, essentially during my childhood हम summer vacations में हम बुरहानपुर में जो हमारा my grandmother's home was in बुरहानपुर, तो वहाँ पे हम तापी नदी को जो देखा है और एक्सपीरियंस किया है एज अ चाइल्ड, वो काफी डिफरेंट था फ्रॉम द वे हम आज जो तापी नदी की स्थिति देख रहे हैं। So essentially, there used to be watermelon sort of farms around the Tapi River in the city of Burhanpur, and there used to be this one very interesting structure. तो तापी रिवर के बीच में बुरहानपुर शहर में वहाँ पे एक एलिफेंट बनाया गया है in middle of the river. And जब भी आपका रिवर का वाटर लेवल वो एलिफेंट स्टैचू को क्रॉस करेगा, एक वाटर लेवल बेंचमार्क को क्रॉस करेगा, उसके अराउंड 3 या 4 दिन बाद सूरत में फ्लड आने का मतलब दैट यूज्ड टू एक्ट एज अ वार्निंग कि इतने 4 दिनों बाद सूरत में वो फ्लड आएगा। बट वो जो एक रिस्पॉन्स है, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ वेरी वेरी नेचुरल काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स टू वाटर सिस्टम्स, whereas what we have done to our rivers in the past 30 years and last 300 years at large is something which is very defensive, manipulative, and also something which is leading us to this current condition.
So again, a couple of more instances from Causeway, जहाँ पे अगर जो आप इस पार्ट इस शहर के इस हिस्से में जाएंगे तो even the water sort of starts to smell foul, and we have water hyacinth which has started to grow in this part. And then coming to one of the recent urban transformation or urban development projects which has happened, गोपी तालाब जिसकी हमने initially बात की थी, तो वो that used to act as a natural sort of response or through a man-made lake at certain point of time in history. But recently the nature of urban transformation, what we've seen is, I remember हमारे एक मित्र हैं मुंबई से, और पहली बार जब हम इन्हें यहाँ पे गोपी तालाब दिखाने ले गए, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन वाज कि ये इवन एंट्री टू दिस पर्टिकुलर एरिया looks like an Israeli checkpoint, जहाँ पे there are good 10-15 meter high compound walls with barbed wires which sort of guard this particular lake as a quote unquote public space of the city. But it's on, we would really want to question if it's really public and whom does it cater to. And simultaneously what we realize is कि ये lake में currently, because हमने जो इसका natural response था उसे खत्म कर दिया है, हमें इसमें artificial pipe से पानी we need to fill in on a daily basis in order to sustain this particular lake and sort of create a public space around it, which is also a ticketed and privatized sort of a public space. And the evictions which happened around in the due process of making this city level recreational space is something जो we need to question as a development paradigm. जब हम development की बात करते हैं, कभी-कभी हम ये शब्द को एकदम loosely ले लेते हैं, and we don't question what we are doing in the name of development. So again, it's very, very, I would say, almost on the lines of Disneyfication of a public space or something which has happened around the a water body. But in future as we go further, हम lake को कैसे एक how can we build a natural response is something which would be an interesting transformation of this particular lake going further. So again, couple of more images from the transformation of this particular precinct. And as we move further, again, if we go to Adajan and other parts of the city further down, as we are moving towards the sea now, what we start to realize is that there are city level recreational spaces which have emerged along the river edge. But historically rivers का जो मतलब हमारे cultural connotation आप कह लो या फिर association कह लो, so that is something which was never only meant for recreation. हम rivers को सिर्फ एक recreational purpose से approach नहीं करते थे, but there were multiple spiritual and multiple associations which were related to the river, and that is something which we need to take further and bring up this multitude and diversity of associations and cultural diversities at large as well. And essentially ये part इस शहर के ये हिस्से में हम देखेंगे तो every summer season जैसे हमने causeway बनाया है, तो इस शहर के ये part में summer season में river beds आपके already dry up हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप पूरा river bed जो है वो काफी एक dried up area होता है, जो flood plains आप देखेंगे वो सारे dried up हैं. So every month, every summer season, we tend to sort of encroach bit by bit onto the riverbed itself. And since our river ki, you can't really define a boundary, so eventually the entire development machinery which we are observing in the city starts to encroach the river bit by bit. And what has subsequently happened is that there is eutrophication of the river. And what we are seeing in this image in specific is that Surat is also home to a lot of migratory birds from around the world.
specifically winter season में सूरत शहर में आते हैं, and these river beds used to be their nesting grounds and very ecologically sensitive habitat for them for breeding. So that is something which in the due course of development we have managed to destroy, and moving on further, there are definitely weekly markets. ये जो image देख रहे हैं तो यहाँ रविवारी market की ये image आप देख सकते हैं. So there are temporal associations, but that is something which we need to sort of strengthen through our imagination as well as development paradigms further. And going on further, as I said, these images have been captured in the year 2021, and in the same day, एक ही दिन में आप देख पाएंगे that the river sort of flows through the city in its full glory to goes extremely dry, because it is at the mercy of our sort of control. And certainly moving on further, there are issues around sand mining, which we sort of are observing in multiple stretches of the city. And going further, there are a lot going further down, there are these places where there are walkways and promenades which are emerging, but the river is something which has been lost in the due course of narration. So there are historical temples, even this particular temple precinct called Ambika Niketan. Yahan pe bhi, it used to have a very sort of a beautiful spill and a sort of connection with the river, जहाँ पे आपका मंदिर and river का जो connection था या फिर उसकी sanctity थी, वो काफी strongly एक one point of time in history वो exist करती थी, but with time that is something which has been again lost. And currently आप river को you can just see it from a net, आप एक जाली में से आपको river को देखना पड़ता है. तो essentially like when we look at these development paradigms, that's something which gets extremely worrying. And now we move to the step river of the city, as the city sort of chooses to ignore the Bintola river. What we are seeing in these pictures is that yahan pe there's definitely a lot of industrial waste discharge, untreated wastewater and sewage discharge as well, and issues around those lines. And in order to sort of hide what's happening with regards to the water systems, we see a web of flyovers, jahan pe aap, you go from one flyover to yet another one, but you choose to ignore what is happening below that flyover. And moving on further, there are certainly issues which we are also observing in the southwest zone of the city, which is maybe quote unquote the 10% smart part of the city. What we are observing is that there are issues around ground subsidence and dried up water channels, because हम जब PP scheme की बात करते हैं तो essentially it's a land reorganization model. तो जब land reorganize हम कर रहे हैं तो आप आपका कमर्शियल जो एरिया हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटी हो गया, वो तो आप सारा रीऑर्गेनाइज कर दोगे, बट जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, और उनका जो एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, उससे हम वो टाउन प्लानिंग मैकेनिज्म केटर नहीं कर पाता है. तो उसके चलते क्या होता है कि इसेंशली आप एक पॉन्ड को देखेंगे या लेक को देखेंगे, उसके आजू बाजू आप मे बी इस टाइप का ग्रेडिंग करेंगे या कॉन्टूरिंग करेंगे कि उसके चलते जो नेचुरल उसका कैचमेंट है, वो स्ट्रीम का या वो पर्टिकुलर लेक का, वो आप डिस्ट्रॉय करेंगे इन द ड्यू प्रोसेस. एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज लीडिंग टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एज वेल एज ग्राउंड वाटर, हाई लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर सैलिनिटी इन द साउथ वेस्ट जोन ऑफ द सिटी. एंड फर्दर ऑन जितने भी हमारे कनाल्स हैं, आई मीन इवन दिल्ली में, इन केस ऑफ दिल्ली, what we have observed is that as soon as a particular stream of water goes beyond repair or beyond sort of
sort of will to repair or will for intervention, essentially उसे पूरा का पूरा concretize कर दिया जाता है। तो उसका जो आजू बाजू मतलब जो क्रॉस सेक्शन है कह सकते हैं हम, तो वो क्रॉस सेक्शन पूरा कंक्रीट का बना देते हैं। इन मेनी प्लेसेस आप देखें, काफी जगहों पे आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी पूरा कंक्रीटाइज्ड बॉक्स सेक्शन बना दिया जाता है। एंड इन केस ऑफ सूरत, essentially there's a BRTS lane, जो BRTS corridor है, that just sits onto the already existing water channels further. And this is what we see as the condition of canals along the वेसू पार्ट ऑफ द सिटी। एंड जैसे आप रिवर को देखेंगे मगदला वाले एरिया में, जहाँ पे हमारे काफी सारे बाकी इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं, जैसे हजीरा हो गया, क्रिप्को हो गया, ऑल ऑफ दीज जोन्स। सो फर्स्टली यहाँ पे भी देयर इज एन इशू अराउंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज, एंड with the riverfront proposal in place जो last around 10 years से, which has been in conversation and progress, essentially what is happening is कि यहाँ पे there's another proposal to create a barrage at just the mouth of the river, जहाँ पे river and sea, river is meeting the sea, at that particular junction is where this another part of the barrage is being proposed. So essentially first we dammed the river in multiple locations, and now even within the city want to turn it into a water tank per se. So it's no more a river, but it's a city level swimming pool, for swimming pool or a tank, or maybe we find another vocabulary or a language for it. So, and when this particular riverfront proposal came into place, people had these conversations, and even the media wanted the riverfront to be developed such that the city of Surat becomes like Singapore, city of Surat becomes like Shanghai and Dubai and whatnot. But to my mind, firstly, the city of Surat needs to become the city of Surat itself. And this kind of an idea jahan pe we are looking at certain models of growth, certain models of development, and certain models of urbanization as being superior to vis-a-vis looking at what we've already managed to destroy and lose in the past 30 years, is something which one needs to really question and move further. So going on further quickly, हम तापी riverfront का जो proposal है, which is in place, I would briefly want to touch upon it because it is something which is very, very important and crucial kind of transformation which we are seeing in rivers across major cities across India, rivers in major cities across India. So essentially, this riverfront proposal, what we are seeing, which has been under under plan, it imagines the 33-kilometer stretch of river on the either side as being the recreational sort of zone of the city, a continuous recreational zone on either side of the river for 33-kilometer stretch. And essentially, this approach to looking at riverfront has its own inherent limitations. The first limitation being we are reducing the free-flowing river, which was a perennial free-flowing river, to a water tank. That is at the first level, at which we'll be looking at the limitation. At the second level, जितनी भी हमने अभी तक histories देखी, जो अश्विनी कुमार वाला area हमने देखा, और काफी सारे अलग-अलग associations with the with river जो हमने देखे, so those local histories and associations will sort of be destroyed and washed away in the due course in which this development unfolds. And जब causeway भी बना था, there were a lot of fields and a lot of historical precincts which were submerged in the area of Tadwadi and areas beyond causeway, in the upstream of causeway. And the third which important limitation of this way of approaching riverfront is the fact that we are not looking at sort of ecological system or the water systems of the entire city, जो हमने initial slides में देखा, जहाँ पे हम सारे water streams की बात कर रहे हैं, canals की बात कर रहे हैं,
wetlands की बात करें, so we do not look at these water systems as an integrated whole, but हम सिर्फ एक river के stretch को हम देख के उससे हम recreational purpose के लिए हम उसे transform करने की बात करते हैं. And finally, this comes also with an unintended or a sort of plan of local communities, as well as gentrification that might happen with privatization of river edges in the due course of time. So the key objectives of this particular proposal have been to mitigate flood, but as we looked at, if we have not really learned from the lessons of the year 2006, which it had offered, then we are not really mitigating flood. Cleaning the river, so again, like जैसे हमने causeway देखा, and when we looked at other parts of the city as well, cleaning is not a mechanical, cleaning rivers is not something which is a very mechanical approach to working with rivers. And rivers are a self-cleansing sort of living entities which we often do not acknowledge, but if we do not acknowledge that potential of rivers to self-cleansing themselves, then we are even going to fail in the second idea. The third idea we already talked about, and the next one, to create a continuous public realm, is something where we need to also critically look into if this continuous public realm which we are talking about, does it include all sorts of diverse associations with the river, or is it only reduced to mere recreation? And in case of Sabarmati, which has been looked upon as the model of riverfront, essentially after concretization of the entire river edges, and it has been reduced to canal, and now there are obvious issues around what kind of public realm are we looking at, and it's again no more a river at all. And the last one is where I maybe see a little bit of a hope, which is public amenities and projects, but we cannot really just look at the sort of riverfront proposals or these kind of transformations only in terms of existing strengthening of existing roads and providing new roads and development infrastructure, but we need to look at it as an integrated system, ecological systems, and essentially adapt to it. So sharing one of our very early studies जो हमने किए थे as an undergraduate student in architecture at SCET, हमने ये पूरा जो area है around अश्विनी कुमार उसका हमने study किया था, और जितने अलग-अलग type के associations which people have, local histories which people associate with, and these histories are something which emerge from the ecology. These are not something which are political histories. Definitely there are social sort of perspectives to it, but a lot of these built environment responses which we observed in specifically the Ashwini Kumar area study, there was a very deep sense of connection with the river. जैसे हम ये महाप्रभु जी बैठक की बात करें in specific, तो यहाँ पे घाट से लेके there used to be घाट्स, मतलब नदी किनारे काफी घाट हुआ करते थे, and आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे तो वहां से आप there used to be a tunnel, एक टनल था जो डायरेक्टली आपको टेम्पल कोर में आपको लेके आएगा. So there were these very I would say wise architectural interventions which were devised along the river edges, just the way we talked about the one in Burhanpur, the one which is here along the Ashwini Kumar. So ये काफी सारे ऐसे important ecologically sensitive interventions हुए हैं in past, which we need to duly learn from, and also look at riverfront transformation not as just a large-scale infrastructure project, but looking at it as a series of local area-based plans. So जब हम planning की बात करते हैं तो कुछ चीजें maybe हम master plan level पे देख सकते हैं, but
large amount of thrust has to be laid onto the local area planning as well, jahan pe we do a detailed analysis and study around community profiles, around social fabric, and along how economies are distributed at large. And this leads me to another the next series of work, which was my thesis study during जब हम मास्टर्स ऑफ अर्बन डिजाइन कर रहे थे एसपीए दिल्ली में, तो तब हमने हाउ डू वी रियली लुक एट रिवर्स एट बोथ द स्केल्स, जो हमने लोकल एरिया प्लानिंग लेवल की बात की, प्लस दिस स्केल वेयर हम जहाँ पे हम रिवर को एक साइट के रूप में या फिर एक बाउंड्री के रूप में ना देखें, बट एक कंटिन्यूअस रीजनल सिस्टम के रूप में कैसे देखें. So, जो commons hai, they need to exist at multiple scale, at the scale of a neighborhood, at the level of a community, a district, a city, and eventually at the regional scale as well. And with that, I would again go back to where we started from, which is how do we align, or should we align our urban processes to the economic model or the larger current economic model which we are a part of, or should we align our economic models to the kind of urban we aspire? And by the urban which we aspire, I mean the urban which is defined by the ecological planetary limits. So that is something which I would sort of leave everyone in the room as a point of departure or a discussion. And from my engagement with the water systems and rivers all across, what I've realized is that all of these questions around urban transformations, these cannot be addressed only from sort of urban planning lens, या फिर आप उसको सिर्फ environmentalist की तरह देखेंगे या economist की तरह देखेंगे. So you cannot look at it as a series of silos, and that is where we need to look at it as a multidisciplinary integration, and we need to move beyond that crisis of fragmentation of thoughts, fragmentation of our conception and worldviews, and further on the fragmentation of actions. So with that, I would end my presentation here, and I would leave you with these thoughts, and looking forward to your further questions, reflections, thoughts, and your learnings from other parts of the river. Hello, Nikhil bhai. बहुत बढ़िया. Good evening. नमस्कार. निखिल भाई, आपने जो पूरा बहुत अच्छे से काफी डिटेल में either naturally happening or wherever we have I agree with that completely, and as I already said, मतलब वो design जो conception है या जिस तरीके से वो design conceive किया गया है is where the problem lies, and I would believe that that is where the solution lies as well. And जो lake है उसकी edges को जो हमने concretize किया है all together, that is something which is sort of breaking that axis, that climate axis जो हम बात करते हैं काफी बार, तो that is something which has already been designed in the very conception of this particular lake, and that is because Gopi Talab, as we see, definitely it's one of the most recognized and celebrated places in the city, but if it can turn into a model which is more ecologically responsive, then we can hope other parts of the city to learn from it, and also develop a network and an integrated sort of way of approaching water plan and water management system of the city at large. आपने बहुत अच्छे से ये बताया, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी इज इट इक्विप्ड कि इसको फिक्स करना है, सही करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई रास्ता है क्या?
मुनि जी, जस्ट वन रिक्वेस्ट, हमारे दूसरे स्पीकर जो ट्रैवलिंग में है, तो हाँ। पहले उनका बात सुन लेते, जी फिर जी जी, क्वेश्चन आंसर धन्यवाद लेते। एक्चुअली धन्यवाद। उनका रेंज का इश्यू या है, तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। बाद हम सुन लेते हैं। सुनीता दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्रमोद सरदार सर है, उनका परिचय करवा दीजिए। जी हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है। आज के हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं प्रमोद सरदार जी, एक जल प्रेमी है और पिंजर जिला अकोला में 10 से 15 सालों से वह जल कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के जल साक्षरता केंद्र के प्रशिक्षक है और अभी जो अपना अभियान चल रहा है चला जानो या नदीला, इस कार्यक्रम के तहत पिंजरदा नदी के वह समन्वयक है और उस नदी पर वह काम कर रहे हैं। तो ऐसे जल प्रेमी से अभी हम बात सुनने जा रहे हैं श्री प्रमोद सरदार जी। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता दीदी। प्रमोद सरदार सर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। प्रमोद सरदार सर। हॅलो, हाँ सर, बोला। आवाज येते सर्वांना? हो, येतोय। हा, सर्वांना मी माफी मागतो, कारण मी इथं नागपूरला थोड्या जलबचतीच्या कामासाठी आलेला आहे. त्यामुळे मी गेल्या 1 तासापासून नागपूर रेल्वे स्टेशनवर उभा असल्यामुळे आपल्या या वेबिनारला जॉईन होऊ शकलो नाही. परंतु आता थोडी रेल्वेमध्ये मला जागा मिळाली, त्यामुळे मी आता तुमच्याशी थोडा संवाद साधणार आहे. तर मी आता जो आपला व्हिडिओ आहे तर तो व्हिडिओ बंद ठेवून तुमच्याशी संवाद साधतो आणि सर्वांची माफी मागतो की मला जॉईन व्हायला थोडा उशीर झाला. तर चला जाणू या नदीला, आओ तापी नदी को जाने, हे जे वेबिनार आपण चालू केलेलं आहे, तर विशालजी सोनकुड सर आणि त्यांची पूर्ण टीम, मला त्यांच्या कार्याविषयी बऱ्यापैकी माहिती आहे, परंतु मी त्यांच्या या वेबिनारला आज जॉईन होतोय आणि चला जाणू या नदीला सध्याची जी नदीची स्थिती आहे आणि पाण्याचा ताळेबंद आहे, तर पाण्याच्या या ताळेबंदाचं खरंच आपला गरज आहे का? पाण्याचा ताळेबंद म्हणजे काय हे आपण आता तसा प्रॅक्टिकलचा तो आपण थोडंसं थिअरी मधून थोडंफार आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. माझा आवाज येते ना सगळ्यांना? हो, हॅलो, येतोय. येतोय ना? हो. तर नेमकं पाण्याचा ताळेबंद म्हणजे काय? तर वॉटर बजेटिंग म्हणजे आपल्याकडे उपलब्ध पाणी किती आहे आणि आपल्याला पाणी किती खर्च करायचं याचा जो ताळमेळ साधणे म्हणजे पाण्याचा ताळेबंद, म्हणजे वॉटर बजेटिंग म्हणू आपण त्याला. मग पाण्याच्या ताळेबंदाची काय गरज आहे आपल्याला? पाण्याचा ताळेबंद करावा लागेल का? त्याच्यासाठी आपल्याला आवश्यकता आहे का? तर मी म्हणेल की नक्कीच आपल्याला पाण्याचे ताळेबंद करण्याची खूप गरज आहे. कारण आपल्याकडे पाणी किती उपलब्ध आहे आणि उपलब्ध पाण्यामध्ये आपल्याला कुठली पिकं घ्यायची आणि पिण्यासाठी किती खर्च करायचा, या गोष्टीची आपल्याला त्या पाण्याच्या ताळेबंदामधून, वॉटर बजेटिंग मधून आपल्याला जाणीव होऊ शकते. मग आता पाण्याच्या ताळेबंद, वॉटर बजेटिंग करण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टीची आवश्यकता आहे? तर आपल्या गावची लोकसंख्या किती आहे, आपल्या गावामध्ये जनावरांची संख्या किती आहे, आपल्या गावामध्ये तलावांची संख्या किती आहे, विहिरींची संख्या किती आहे, आपल्या गावातून नदी वगैरे जाते का, आपल्या गावाचं पाणलोट क्षेत्र कुठलं, आपल्या गावाचं भौगोलिक क्षेत्र किती, या एकूण आणि दरवर्षी पडणाऱ्या आपल्या पर्जन्याच्या नोंदी, या सगळ्या गोष्टीची वॉटर बजेटिंग करत असताना या गोष्टीची आपल्याला गरज आहे.
आम्ही आमच्या या अकोला जिल्ह्यामध्ये माझं पिंजर हे गाव आहे. तर या आजूबाजूच्या पूर्ण गावामध्ये आम्ही स्वतः फिरून कोणकोणते स्ट्रक्चर आहेत, पाण्याचे जलस्रोत कुठले कुठले स्रोत आहेत, याच्या आम्ही पूर्ण नोंदी घेऊन बऱ्यापैकी पूर्ण गावचा जो डाटा जमा करून आम्ही बऱ्याच गावचा पाण्याचा ताळेबंद सुद्धा केलेला आहे. मग आता पाण्याचा ताळेबंद कोणत्या गोष्टीची गरज आहे आपण आताच पाहिलं. तर मग या पाण्याच्या ताळेबंदाचे आपण फायदे काय आहेत, तर या पाण्याच्या ताळेबंदाचे जर फायदे आपल्याला समजून घ्यायचे असतील तर आपल्याकडे जर समजा उपलब्ध पाणी कमी आहे, ताळेबंद नसेल किंवा बजेटिंग आपण केलेलं नसेल, पाणी कमी असेल, मग एखाद्या शेतकऱ्याने जर समजा पीक पेरलं असेल आणि मधामधूनच त्याला जर पाणी कमी पडलं तर त्याचं अतोनात नुकसान होऊ शकते, त्याचं पीक वाया जाऊ शकते. परंतु आणखी जर सोपं म्हणायचं असेल तर आपल्या खिशामध्ये पैसे किती आहेत आणि खर्च किती करायचे हे जर आपल्याला समजलं, तोच म्हणजे वॉटर बजेटिंग. जसं आपण आपल्या मनी बजेटिंग करतो तसंच ते आपण वॉटर बजेटिंग सुद्धा करायला पाहिजे. आता शेतकऱ्याला ह्या साऱ्या गोष्टीची जाणीव नसते किंवा माहिती नसते, तर याच्यासाठी प्रचार प्रसिद्धी आणि जनसाक्षरता या गोष्टीची फार गरज आहे असं मला वाटते. तर मग आता आपण हे जे शेतकरी लोक आहेत ते पाणी पाटपाणी देतात आणि पाटपाण्यामुळे अतोनात पाण्याचं नुकसान होते आणि बऱ्यापैकी 40% पाणी हे वाया जाते. तर मग पाण्याची आपल्याला जर बचत करायची असेल तर आपल्या पीक पद्धतीमध्ये सुद्धा आपल्याला थोडा बदल करावा लागेल. पीक पद्धतीत बदल आणि सिंचन पद्धतीत सुद्धा बदल आपल्याला करावा लागेल. जर शेतकरी पाटपाण्याने जर पाणी देत असेल तर जर समजा त्याने जर सिंचन पद्धत बदलली, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन ह्या गोष्टीचा जर त्याने अवलंब केला, वापर केला तर 40% पाण्याची बचत आपण निश्चितच करू शकतो. म्हणजे हप्त्यातून एका दिवशी जेवढं पाणी आपण एका पिकाला देऊ तेवढ्या पाण्यात आपण 2दा आपण पिकाला पाणी देऊ शकतो. आता आपल्याला प्रश्न पडते की देशामध्ये, पूर्ण भारत देशामध्ये धरणं आहेत आणि या पूर्ण धरणापैकी 40% धरणं हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. हा विचार करण्याजोगती गोष्ट आहे की 40% धरणं जर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जर असतील देशाच्या एकूण धरणांपैकी, तर तरीही महाराष्ट्र हा दुष्काळ महाराष्ट्रामध्ये का पडतो, हा सुद्धा एक प्रश्न फार महत्वाचा आहे. हा सतावणारा प्रश्न आहे. याच्यासाठी आपल्याला मनन चिंतन सुद्धा करावं लागेल की एकट्या या महाराष्ट्रामध्ये एवढ्या प्रमाणामध्ये धरणं जर असतील तर मग महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ का पडतो. लातूर सारख्या ठिकाणी रेल्वेने पाणी का न्यावं लागते. विदर्भामध्ये, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये का पाऊस कमी पडतो. तर याचं कारण आहे की वृक्षतोड आणि हवामानात झालेला बदल. तर आता आपण 50 वर्ष अगोदर जेवढा आपला पाऊस पडत होता ना आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये, तेवढाच पाऊस आजही पडतो. त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की पाऊस हा दरवर्षी कमी कमी होत चालला, पाऊस हा कमी पडतो, तर हे सगळं चुकीचं आहे. कारण एका ठिकाणच्या सगळ्या नोंदीवरून असं लक्षात आलं की 50 वर्ष अगोदर जेवढा पाऊस पडत होता आजही तेवढाच पाऊस पडतो. मग 50 वर्ष अगोदर जेवढा पाऊस पडत होता आजही तेवढाच पाऊस पडतो. मग नद्या का आटल्या, जलस्रोत का आटले, विहिरीमध्ये पाणी का नाही, हा सुद्धा आपल्याला विचार करण्याजोगी गोष्ट आहे. आमच्या अकोल्याच्या जलसंपदा विभागामध्ये प्रशांत असणारे सर आहेत, ते अभियंता आहेत, ते फार सुंदर याच्यामध्ये लिहितात. ते काय म्हणतात की पूर्वी विहिरीमध्ये जर वंजळ टाकली तर पाणी भरभरून यायचं. पूर्वी विहिरीमध्ये जर वंजळ टाकली तर पाणी भरभरून यायचं. आता विहिरीच्या तळाशी जरी जाऊन बसलं तरी पाण्याचा एक थेंब लागत नाही. पूर्वी कुणाच्या खांद्यावर जर मायेने, प्रेमाने हात ठेवला तर त्याला भरभरून यायचं, अश्रूंच्या धारा वाहायच्या. परंतु आता हृदयाच्या तळाशी जरी हात टाकून बघितला तरी मायेचा ओलावा लागत नाही. शेवटी विहीर काय, नदी काय, तलाव काय, माणूस काय, चराचरातून पाणी आटत चाललंय, चराचरातून पाणी आटत चाललंय. म्हणजे इतक्या सुंदर शब्दामध्ये त्यांनी उदाहरण दिलं की माणसामधलंही पाणी आटत चाललंय आणि जे जलस्रोत आहेत त्याच्यामधलंही पाणी आटत चाललंय. पूर्वी
पाऊस जेवढा आज पडतो ना तेवढाच पाऊस पडत होता, परंतु कसा पडत होता की आज जो पाऊस पडतोय तर तो 1500, 1400, 1600 तास पाऊस पडत होता 50 वर्ष अगोदर. आज पावसाळा तेवढाच होतो, परंतु जो पडणारा पाऊस आहे तो 300 तासामध्ये पडून जातो. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य, जो रिमझिम रिमझिम पाऊस पडत होता एकेकाळी, आज तो त्या पावसामध्ये रिमझिमपणा राहिलेला नाही आहे, तर तो जोरदार धारदार वादळी वाऱ्यासह पाऊस येतो आणि पडतो आणि निघून जातो. म्हणजे त्याचा पडण्याचा जो वेग आहे तो पडण्याचा वेग वाढलेला आहे. मग हा पडण्याचा वेग का वाढला? तर याच्यासाठी आपण विचार करू की हवामानामध्ये झालेला बदल, अचानक झालेली वृक्षांची कत्तल, हा त्याच्यामागचं प्रमुख कारण आपण लक्षात घेऊ. आता आपण म्हणतो की आसाममध्ये जास्त पाऊस होतो, चेरापुंजीला पाऊस जास्त पडतो, तर त्याचं कारण काय आहे? त्याचं कारण पण आपण शोधलं पाहिजे. कारण आसाममध्ये सगळीकडे वनराई जास्त आहे, चेरापुंजीमध्ये सगळी वनराई आहे आणि ते झाडं जास्त असल्यामुळे, त्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे ते पूर्ण ढग तिकडे आकर्षिले जातात आणि आकर्षिले जातात आणि तिथं 15,000 सेंटीमीटरच्या आसपास वरूनही इतका तिथं पावसाळा होतो. मग आता इतक्या प्रमाणामध्ये जर पावसाळा झाला तर त्या दिवशीच आपल्या ग्रुपवर एक बातमी प्रकाशित झाली की चेरापुंजी में बिक रही 50 रुपये की पाणी की बॉटल. आता विचार करण्याजोगती गोष्ट आहे, थक्क करणारा प्रश्न आहे, चिंतन मनामध्ये विचार आणणारा प्रश्न आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर चेरापुंजीला पाऊस पडत असेल आणि तिथं जर पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवत असेल तर याला कारण काय? याच्यावर आपण जमिनीवर अभ्यास करणारे सगळे लोक आहोत. तर याला कारण की जलसंधारणाचे काम आपण केले नाही. कारण पडणारा पाऊस हा पडतो, पडून सरळ तो वाहून जातो. त्याला थांबवण्यासाठी, थांबलेल्याला जमिनीमध्ये मिळवण्यासाठी आपण कुठलेही प्रकारचे उपाय अजूनपर्यंत केलेले नाही. आता कुठं आपण जलसाक्षर होत आहोत, नदी साक्षर होत आहोत, तेव्हा कुठं आपल्याला या पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवत आहे आणि तेव्हा कुठं आपण या पाण्याचा आपण संचय कसा होईल, जमिनीमध्ये कसं मुरेल, तर याच्याकडे आपण सगळ्या लक्ष केंद्रित करत आहोत. तर आज हे जे जलयुक्त शिवार अभियान आलेलं आहे, याच्या अगोदर सुद्धा हे राबवलं गेलेलं आहे. तर यामुळे बऱ्याचशा गावांना फायदा सुद्धा झाला. जिथं खरोखर जमिनीवरती कामं झालेत ना, त्या ठिकाणी निश्चितच पाण्याची पातळी वाढलेली आहे. आणि आता अभियान सुद्धा आता डबल आलं, जलयुक्त शिवार अभियान 2 ते सुद्धा आलं. तर गावागावामध्ये असे जलबचतीची जर कामं करायची असेल, व्हायची असेल, तर त्या पाण्याची पातळी ही पुन्हा वाढणार आहे. सर्वसाधारण आपण एकदम सोप्या भाषेत जर म्हटलं तर आपण काय केलं की जमिनीमधलं आपण पाणी काढत गेलो, जमिनीमधलं पाणी आपण काढत गेलो, जमिनीमधलं पाणी आटलं. म्हणजे जमिनीवर असणारं पाणी, एकेकाळी नदी ही बारमाही वाहती होती, हातानं पाणी आपण पित होतो, वंजळीनं पाणी पित होतो. आज विहिरीमध्ये ही पाणी नाही आणि आज 300 फूट 400 फूट 500 फूट आपण बोर मारतो, त्याच्यामध्ये सुद्धा पाणी नाही. म्हणजे जे आपल्या आजोबाचं तर सोडा, तात्पर्य 500 फुटावरून जर आपण पाणी काढत असेल तर ते पाणी नाही आहे, ते पाणी नाही आहे. ते काय आहे? या धरती मातेचं आपण दूध तेव्हा संपवलेलं आहे. आता जे काढतो ना आपण 500 फुटावरून, ते धरती मातेचं दूध रक्त पितोय आपण सगळे जण. म्हणून तिला ती आजारी झालेली आहे जमीन, ती तापलेली आहे. जर आपली आई जर आपली तापाने जर पडलेली असेल तर आपण काय करतो? आपण थंड्या पाण्याच्या पट्ट्या तिच्या डोक्यावर ठेवतो, किंवा आपल्या घरी जर कोणी तापेनं जर गरम झालं असेल तर आपण ओल्या पट्ट्या करतो आणि त्याच्या डोक्यावर ठेवतो आणि तो ताप शांत होऊन जातो. तसंच या धरती मातेला ताप आलेला आहे, भयंकर ताप आलेला आहे. आता सध्या 5-5:30 वाजले तरीही उन्हाचे चटके अजूनही आपल्याला टोचतात, अजूनही लागतात. मग याच्यासाठी जसं आपण पाण्याच्या पट्ट्या आपल्या डोक्यावर ठेवतो, तसं या धरती मातेला आपल्याला शांत करायचं असेल तर जलयुक्त शिवार अभियानामार्फत सीसीटी आहेत, सीसीटी आहेत, नाला खोलीकरण आहे, नाला रुंदीकरण आहे, एवढे जलस्रोत खड्डे आहेत,
म्हणजे जेवढे आपल्याला या बचतीचे जलबचतीचे कामं करता येतील तेवढे आपण कामं करायला पाहिजे. पूर्वी पाणी पडायचं, पाणी पडून जमिनीमध्ये मुरायचं, आता का मुरत नाही? कारण शहरात तर सोडा हो, स्मार्ट सिटी आणि आमच्या खेड्याकडे स्मार्ट व्हिलेज पण आलं. अरे पायाला घराबाहेर आपण पडलो तर पायाला माती सुद्धा लागत नाही. आता हे झाडाचं उदाहरण घेऊ आपण. आपल्याला दिसते का दिसते हो? कारण कुठल्या महानगरपालिकेने किंवा ठराव घेतला का रंग द्यायचा म्हणून? नाही, ठराव घ्यायचं कामच नाही. त्या झाडाची मुळं फक्त या मातीमध्ये रुजायला हवी, त्यावेळेसच ते झाड हिरवगार राहील. तसंच माणसाचं सुद्धा आहे. माणसाचे सुद्धा पाय या मातीमध्ये रुजायला पाहिजे, या मातीवर असायला पाहिजे. परंतु आज सिमेंटचे रोड, सिमेंटचं जंगल, सिमेंटचे घर, सिमेंटचे गाव आणि लोकांचे मन सुद्धा सिमेंट सारखे झालेले आहेत. आणि समोर एकदम सिमेंटचा रोड असतो, एक ट्रेन सरळ आणि त्या नालीमध्ये जाते, मध्ये जाते, झालं पाहिजे. विशाल, आवाज थोडा होत आहे. हॅलो हॅलो, कोणी काही प्रश्न केला का? हा, तुमचा आवाज ब्रेक होत होता. अच्छा अच्छा, ब्रेक होतोय का आवाज? हा, आता क्लिअर आहे, आता क्लिअर आहे. हो, मी ट्रेन मध्ये आहे सर. ट्रेन मध्ये असल्यामुळे थोडं नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. तरी असो, मी सर्वांची माफी मागतो, कारण आज तुमचा मी वेळ घेतला तरी पण मी थोडा जलबचतीच्या कामानिमित्त नागपूरलाच आलेल्या असल्यामुळे डॉक्टर उज्ज्वल कुमार चव्हाण सरांच्या माध्यमातून त्यामुळे मी आणि तुम्हाला सोय करू शकू राहिलो नाही. त्यामुळे मी तुमची पूर्णच माफी मागतो आणि आपल्या मूळ मुद्द्यावर आपण येऊ की आपण जलबचतीचे कामं हे केले पाहिजेत. आता नद्यांची परिस्थिती, नद्यांची स्थिती काय झाली हो? पुऱ्या भारतामध्ये त्याची एक तरी नदी दाखवा की त्या नदीमध्ये आपण गोंधळभर पाणी पिऊ शकू. तर पाणी पिणं तर सोडा हो, आंघोळ सुद्धा करू शकत नाही. म्हणजे एवढी नदीची परिस्थिती, नदीची स्थिती का दयनीय, अवस्था का झाली? पूर्वीची स्थिती कशी होती नदीची? एवढी घाणेरडी आमची नदी नव्हती. नदीच्या काठावर मोठमोठ्या संस्कृत्या उदयास आल्या. हिंदू संस्कृती, सिंधू नदी ही पाकिस्तानातून वाहते, तर तिथं समृद्धता होती. परंतु आज ती नदी आटत चालली, आटलेली आहे. तर पाकिस्तानमध्ये आज दुष्काळ पडलेला आहे. माहित आहे का? 60 रुपये कट चहा मिळतोय म्हणतो तिथं, 130 रुपये किलो तिथं गव्हाचा आटा मिळतोय. ही परिस्थिती का आली त्या पाकिस्तानवर? कारण एवढी मोठी सिंधू नदी ही मृत अवस्था झाली तिची. कारण तिच्या नदीच्या काठावर मोठमोठ्या संस्कृत्या उदयास आल्या आणि आज या नद्या आटत चालल्या आहेत. आटत चालल्या नाही तर त्या गटारी झाल्या. गटारीचं स्वरूप त्याला प्राप्त स्थिती कोणी केली अशी? आज एकेकाळी त्या नदीला आपण माता म्हणतो, त्या नदीची अवस्था अशी झाली. तर अवस्था अशी झाली तर त्याच्यासाठी पण आपल्याला काय करता येईल? कारण नदी ही नदी राहिलेली नाही, ती माता राहिलेली नाही, ती महिला वाहून नेणारी मालगाडी झालेली आहे. नाही पण पहा तुम्ही, पूर्ण भारतामध्ये एकही नदी तुम्हाला सगळ्यांकडे आहे. भोळे बाबडे लोक, भोळे बाबडे भक्त छोट्या मोठ्या तीर्थक्षेत्रावर जातात आणि हे दूषित पाणी तीर्थ म्हणून घेतात. म्हणजे त्या नागरिकांच्या आरोग्याची आपण खेळतोय, सरकार खेळतोय, कोणीच त्याच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. आणि हे कशामुळे झालं या नद्याची स्थिती? याला कारण म्हणजे मानवी हस्तक्षेप. कारण मी भेट दिलेली आहे कुठं, आपल्या कानेवाडीला, पुणे जिल्ह्यामध्ये इंद्रायणीला तिथं भेट दिली. अरे अक्षरशः कारखान्यातून सोडणारं जे सांडपाणी आहे सरळ इंद्रायणीमध्ये सोडलं जाते.
थर्ड इंद्रायणीमध्ये सोडल्या जाते. मग ते जे कारखान्यातून जे दूषित पाणी बाहेर पडते, जे सांडपाणी बाहेर पडते, ते जर नदीमध्ये सोडल्या जाईल तर नदी ही दूषित होणार नाही, नदी गटार होणार नाही, निश्चितच गटार होईल. तर त्याच्यासाठी सांडपाण्याचं व्यवस्थापन सुद्धा आपल्याला करणं गरजेचं आहे. मग काय करता येईल सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी आपल्याला? तर करता येईल. तर त्याच्यासाठी पुणे जिल्ह्यामध्ये एक कानेवाडी गाव आहे. त्या कानेवाडी गाव महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर पूर्ण देशासाठी मी त्या कानेवाडीला भेट दिली. त्या भेट दिल्यानंतर त्या कानेवाडीचं सांडपाण्याचं व्यवस्थापन मी बघितलं तर मी फक्त झालो ते व्यवस्थापन पाहून. आणि असे ट्रीटमेंट त्या नदीला प्रत्येक गावाला प्रत्येकाने द्यावी. तर हे जे सांडपाणी त्यांनी सगळं बंदिस्त गटार बांधून त्या जमिनीच्या खालून पूर्ण नदीच्या काठावर असा जमा केलेला आहे. पूर्ण असा मोठा जलशोष खड्डा खोदलेला आहे आणि सगळं सांडपाणी त्या एका खड्ड्यामध्ये जमा होते आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करून ते आणखी 1, 2, 3 असं 3 खड्ड्यामध्ये जमा करतात. आणि ते जे पाणी आहे काही प्रमाणामध्ये शुद्ध झालेलं पाणी ते वृक्ष लागवडीसाठी वापरतात. म्हणजे त्याचा पुनर्वापर सुद्धा करतात. पाण्यामध्ये जात नाही पाहिलं तर त्या गावाविषयी खूप आदर वाटतो. खूप मला आता कुठून वाटतं त्या गावांचं, त्या सरपंचांचं, तिथल्या सदस्य लोकांचं, तिथल्या ग्रामसेवकांचं की इतका शक्ती जर असली तर आपल्या गावासाठी काहीही होऊ शकते आणि आपण काहीही करू शकतो. तर याचं जिथं जास्त उदाहरण म्हणजे ते कानेवाडी. आता नदीची परिक्रमा, चला जाणू या नदीला. आता चला जाणू या नदीला हे शासनाने अभियान चालू केलं तर लोक त्या नदीला जाणत नाहीत का हो? आता आमचा जन्म नदीच्या काठावर असलेल्या गावामध्ये झाला नाही का? आणि नदी काय आहे, नदीची परिस्थिती काय आहे, आम्ही लहान असताना तेव्हापासून नदी पाहतोय. नदीमध्ये घडलेला बदल 20-25 वर्ष अगोदरली नदी आणि आजची नदी आम्ही एकदम जोडून पाहिलेली आहे. कारण की पूर्वी नदी ही बारमाही होती, बारमाही वाहत होती. आम्ही लहान असताना काही सण असला, काही त्योहार असला तर आमची आई आमच्याकडे कॅन द्यायची पाण्याची आणि जा रे बाळा नदीवरून पाणी आण. काही सण त्योहार असला की पूर्णाची डाळ शिजवण्यासाठी आम्ही नदीवरून पाणी आणत होतो. आणि घरी आता सण त्योहारासाठी त्या पाण्याचा वापर केला जात होता आणि सण त्योहार त्यावेळेस जे साजरे केले जात होते. आज आम्ही आमच्या लेकराच्या कॅन देऊ शकत नाही, नदीवरून पाणी आण त्यांना म्हणू शकत नाही. मग या 20 वर्षामध्ये एवढं काय असं झालं की नदी एवढी दूषित झाली? तर आपला जो वापर आहे, आपला जो हस्तक्षेप आहे अति प्रमाणामध्ये तेच त्याला कारणीभूत आहे. कारण पूर्वी आपण घरामध्ये भांडे घासत होतो, स्त्रिया भांडे घासत होत्या. तर आपण एखाद्या देवाकडे नारळ फोडल्यानंतर त्या नारळाच्या ज्या वरच्या आपण आमच्या इकडे आमच्या विदर्भामध्ये त्याला दसड्या म्हणतात, नारळाच्या दसड्या, त्याची अशी घासणी करायची आणि जे चुलीमध्ये लाकडं जाडायची त्याची राख आणि त्या घासणीने पूर्ण भांडे स्वच्छ करायचे. आणि ते जे मग घरातून पडणारं सांडपाणी होतं ना, तर ते एवढं केमिकल युक्त नव्हतं. आज आपण वेगवेगळे घटक आपण भांडे घासण्यासाठी वापरतो, केमिकल युक्त साधनं आपण वापरतो. आता मी फक्त 4 महिने साबण वापरतो उन्हाळ्यामध्ये. मी 8 महिने साबण वापरत नाही. मी फक्त या उन्हाळ्याची 4 महिने साबणीचा वापर करतो. कारण मी 8 महिने मी बगर साबणाचं आंघोळ करू शकतो. कारण माझ्याच्याने जास्त मोठं काम नाही होईल, परंतु माझ्याच्याने किती होईल, छोट्या गोष्टीपासून आपण सुरुवात करू शकतो का नाही? तर मी पहिल्यांदा माझ्यावर सुरुवाती प्रत्येक करत असतो. कारण गेले पैसा चालले त्याची वंदानी पावली. आपण जर कोणाला काही सांगत असेल तर पहिल्यांदा आपण त्याचं अनुकरण केलं पाहिजे, आपण आपल्या आचरणामध्ये ते आणलं पाहिजे. म्हणून मी फक्त 4 महिने साबण लावतो. आणि आमच्या घरातून जे पाणी पडते ना, तर ते आता केमिकल युक्त पाणी नाही. आणि आम्ही आता एक
छोटासा जलशेष खड्डा घरापाशी खोदलेला आहे आणि तो सगळं पाणी आम्ही त्या जलशेष मध्ये टाकतो. मग आपल्याला विचार येईल की बा मग आपण हे जे सांडपाणी आहे ते आपण जमिनीमध्ये टाकतो, जमिनीमध्ये मुरवतो, तर मग जमिनीचा जो वॉटर टेबल आहे तो प्रदूषित होईल का, हा सुद्धा एक आपला प्रश्न पडणार आहे. तर साधारणतः आपण विहीर की 50 फुटाच्या वरच असतो आणि बोर तर सांगूच नका, 100, 150, 200, 300, 400, 500 अशापर्यंत खोल असतात. मग आता हे जे आपलं 2 फूट 3 फुटाचा 4 फुटाचा जो जलशेष खड्डा आहे, हा आपण मग त्याच्यामध्ये जर हे सांडपाणी आपण सोडत असेल तर ते 50 फुटापर्यंत जाईल का, आणि आपण एकदम विहिरीच्या शेजारी खोदत सुद्धा नाही ना, काही अंतर ठेवून आपण आता जलशेष खड्डा साधारणतः दूर करतो आणि ते तुम्ही म्यूट झालाय प्रमोदजी. हॅलो हा बोला आता. हॅलो, आवाज येते? हो येतोय येतोय. हा सर, ते बरोबर. तर आपण 4x4चा जर खड्डा खोदला आणि त्याच्यामध्ये जर आपण सांडपाणी सोडलं तर 50 फूट खाली जाऊ शकते का? तर जाणारच नाही. कारण आम्ही गेल्या 15 वर्षापासून मी याच्यावर संशोधन करतोय. कारण एक विहीर आहे, त्या विहीर ते 50 फूट खोल विहीर आहे आणि आम्ही त्याच्या 30 फूट लांब त्या विहिरीपासून एक आम्ही असा जलशेष खड्डा खोदलेला आहे आणि तिथंच आम्ही त्या सांडपाणी त्या खड्ड्यामध्ये सोडलेलं आहे. आणि आम्ही दर आठवड्यातून त्या विहिरीचं पाणी काढून पाहतो की बा याच्यामध्ये काही बदल झालाय का, काही याच्यामध्ये सांडपाण्याचं काही क्षार मिसळलेले आहे का, तर आम्हाला त्याच्यामधून नाही हा शब्द आलेला आहे. कारण विहीर ही खोल असते आणि आपण हे जे पाणी जलशेष मध्ये आपण जे अडवतो हे 4 फूट 5 फुटापर्यंत वरच्या जमिनीच्या स्तरापर्यंत असतो. त्यामुळे पाण्याच्या ज्या काही स्त्रोत आहेत ते काही दूषित होतील का, तर नाही. तर आता हे जे 75 नद्यांमध्ये आमच्या अकोला जिल्ह्यातली सुद्धा की जिच्या काठावर जिच्या जरडा नदी नदी असणं आणि आज पावसाळी नदी झाली. प्रमोद सर तुमचा आवाज खूपच ब्रेक होतोय. बहुतेक त्यांचं कनेक्शन आहे. 1-2 मिनिटं वाट बघूया. बिला पाटील सर आवाज येतोय ना माझा? हा येतोय, पण त्याचा प्रमोदचा आवाज येत. त्यांचं कनेक्शनच गेलं बहुतेक. 1-2 मिनिटं वाट बघूया, नाहीतर मग प्रश्न उत्तर घेऊ. विशाल, तोपर्यंत शहा सरांना मी चॅट मध्ये लिहिलेलं वाचायला सांग, म्हणजे मी काहीतरी विचारलंय ते. ओके. निखिल सर, हमारे साथ हमारे सीनियर मेंटर है सुहासताई कोलेकर, जो महाराष्ट्र से है. उन्होंने आपको चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन लिखा है,
तो उसके बारे में वो जानना चाहती है। Right. You can Definitely. answer me at the end when the thing is ready for Absolutely. discussion. Absolutely. Yeah, Yeah. but just have a look, so, or Yeah. you Yeah. can just respond in the chat if the time is limited. Thank you. All right. Definitely. I think I'll respond in the chat if. Yeah. Yeah. Yeah, nice presentation, very Yeah. educative. Thank you. Yeah. Thank you. Suhasta is very younger. At the age of 80 years, she works now. Not 80 as yet, just 73. 73. Okay. आई थिंक वो प्रमोद सर उनका कनेक्शन गया, हम आगे बढ़ाते हैं। निखिल जी, आप अभी जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए रेडी रहिए, और जो बिल्कुल सुहास्ताई ने पूछा उसके बारे में भी बिल्कुल reply। बिल्कुल जी। प्रमोद जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और शुड वी जस्ट मूव फर्दर? एक दो उन्होंने, उनका मैसेज भी नहीं और कॉल नहीं लग रहा है उनका, वो ट्रैवलिंग में ना, इसलिए कनेक्शन गया होगा शायद। All right, बिल्कुल। So yeah, I think to answer it in very simple way, I would say the first step is for communities to get together, because जैसे हम सूरत में बात करें तो सूरत में we have a very active community group called Project Surat, as well as Nature Club, and a lot of other citizen centric groups as well, which are doing good work around आप talking about these issues. हिंदी में जवाब दोगे तो ज्यादा लोगों के लिए अच्छा रहेगा। Right. हाँ, और कम्युनिटी बिल्कुल। दिक्कत भी हो, लेकिन टेक्निकल एज एन आर्किटेक्ट Right. आप टेक्निकल मुद्दे मुझे शेयर करिए, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट किया। बिल्कुल। सो पहले तो हम जो पूरा प्लानिंग मॉडल है, उसे हमें एक मास्टर प्लान बेस्ड मॉडल, जैसे हमने तापी रिवर फ्रंट का भी जो टीम्स जो नदी में आके मिल रही हैं, एज वेल एज जो मॉनसून सीजन में विच बिकम लाइक कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम्स, जो कनेक्टेड स्ट्रीम्स आपके लेक या वेटलैंड्स या वाटर बॉडीज में जाती हैं। तो फर्स्टली तो हमें वो चीज रिकॉग्नाइज करना है कि रिवर्स जो हैं हम उसे साइट बेस्ड अप्रोच में नहीं देख सकते हैं, और उसे एक पूरे इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह हमें देखना है। सो दैट इज द फर्स्ट लेवल एट विच हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्स को हमें शिफ्ट करना जरूरी है। सेकेंडली आई वुड से जो लोकल एरिया प्लानिंग है, वो अभी दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। मतलब जैसे हमने टाउन प्लानिंग स्कीम की बात की थी सूरत सिटी में, एंड काफी जगहों पे गुजरात महाराष्ट्र में ये एप्लीकेबल भी होता है, बट वो जो मॉडल है उसमें काफी हद तक हमने जो देखा है, जो हमारी वाटर सिस्टम्स हैं और जो सिस्टम्स हैं जो लोकलाइज्ड वे में ऑपरेट नहीं होती हैं, जैसे कि आप एक कोई पॉइंट पे अगर जो देयर इज अ पोल्यूशन अराउंड द वाटर बॉडी, सो वो that eventually starts impacting miles and miles downstream. So वो चीज जो लोकल एरिया बेस्ड प्लानिंग है, वो हमें स्ट्रेंथन करना है अलोंग विद द मास्टर प्लानिंग सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म। एंड उसमें अभी आई वुड से कि अभी की जो स्थिति है, इवन हमने सूरत स्मार्ट सिटी के साथ भी हमने काम किया है, तो हमें एक लेवल तक हमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है कि हम अपने रिवर फ्रंट की जो डिजाइन है या फिर उस का पूरा जो मैकेनिज्म है, वो हम लोकल लेवल पे लोकल लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से हम उसे मतलब डेवलप कर सकें। बिकॉज हम अगर जो डेवलप कर रहे हैं, जिससे सिर्फ अगर जो टूरिज्म हो रहा है, सिर्फ रिक्रिएशन हो रहा है,
तो वो एक बहुत ट्विस्टेड नैरेटिव हो जाता है डेवलपमेंट को देखने का। एंड इसमें जैसे सूरत की बात करें तो काफी सारे फिशिंग कम्युनिटीज हैं, काफी सारी जो ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग व्यवसाय भी उनके एसोसिएटेड हैं रिवर नदी के साथ, नदी और वेटलैंड्स और पॉन्ड्स के साथ। और द एसोसिएशन इज नॉट जस्ट लाइवलीहुड बेस्ड बट इट्स आल्सो इकोनॉमिक एज वेल। तो हम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हम समझते हैं और उससे हम लार्जर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो काफी जरूरी है। एंड फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव आई वुड से कि देयर इज अ लॉट जो हमें वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। जैसे हमने बुरहानपुर के कुछ एग्जाम्पल दिए थे, तो वहां पे इवन कुंडी भंडारा करके एक पूरा अंडरग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जैसा है। सो विच इज लाइक, जैसे आप रोम में एक्वेडक्ट्स देखते हैं या फिर अलग अलग सिटीज जो अलग अलग जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक सिनेरियोज में अलग अलग सिटीज ने अपने खुद के एक क्लाइमेटिक रिस्पॉन्स डेवलप किए हैं। तो फर्स्टली तो हमें ये समझना है कि हम जो हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बना रहे हैं उससे हम कोई इमेज नहीं बना रहे हैं, हम उसे एक सेल्फी पॉइंट की तरह या उसे एक मैगजीन फोटो कवर की तरह नहीं देख सकते हैं। और हमें ये समझना है कि देयर आर दीज लार्जर इंटरकनेक्शंस जो हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो जैसे बुरहानपुर के केस में हम देखें, ये कुंडी भंडारा जो है, तो वो नेचुरल लाइमस्टोन से पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी वाइड नेटवर्क बनाया गया था which sits below the city, and उसका जो पूरा मैकेनिज्म है that is designed or devised on very passive energy kind of mechanism. So आपका जो नदी का पूरा नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स है as well as जो ऑस्मोसिस हो रहा है, उसी से वो सारा पूरा सिस्टम वाटर प्योरीफाई भी करेगा और हर एक घर से वो पूरा सिस्टम कनेक्ट भी होता है। तो हिस्टोरिकली हमारे पास काफी सारे ऐसे पैसिव डिजाइन मैकेनिज्म्स और स्ट्रैटेजीज रह चुके हैं जो वाटर सिस्टम्स को अपने इकोलॉजिकल लिमिट के दायरे में समझते हैं और उसके रिस्पॉन्स से वो डिजाइन्स डेवलप की चुकी हैं। सो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि गोइंग फर्दर हमें रिवर फ्रंट इज नॉट ओनली अ परसेप्शन और अ परव्यू ऑफ एन आर्किटेक्ट, बट इसमें हमें एनवायरमेंटलिस्ट लोगों के भी व्यू पॉइंट्स लेने हैं। हमने जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हो गए या मल्टीडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो हमें लेना है। एंड उसमें one of the biggest I would say stake or learning will come from the communities जो on an everyday basis एवरीडे बेसिस पे ये लोग जो वाटर सिस्टम्स के साथ काम करते हैं, जिनका मेरी फॉर्मल एजुकेशनल ट्रेनिंग, मेन स्ट्रीम एजुकेशनल ट्रेनिंग ना हुआ है, बट वो नेचुरल सिस्टम्स को काफी डीपर लेवल पे समझते हैं। नेचुरल साइकिल्स हो गए या फिर इंटरकनेक्शंस बिटवीन वेरियस जो स्पीशीज है या इंटरडिपेंडेंस हैं, वो काफी डीपर लेवल पर समझते हैं। और काफी टाइम जब ये इस टाइप के प्रपोजल डेवलप किए जाते हैं, तो वो एज एन आउटसाइडर फ्रॉम लाइक हाउ आई सी इट एज कि वो 30,000 फीट एज इफ आप हेलीकॉप्टर में या फ्लाइट में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, और फिर आप एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। उस लेवल से ही वो सिर्फ बनाए जाते हैं, ना कि दे डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप। So I would say firstly वो ground up approach, participatory planning वाला approach जो है वो काफी जरूरी है, and how that sort of aggregates to a regional response वो भी काफी जरूरी है। So that is something which is important, and जहाँ के हम देखें कि ये सूरत के केस में जो 33 किलोमीटर का कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ रिवर फ्रंट का जो प्लान है, तो उसमें डेफिनेटली हमें अलग ऑल्टरनेटिव्स प्रपोज करना इज समथिंग व्हिच वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन। जैसे हम सूरत स्मार्ट सिटी के साथ जब काम करते थे, तो हमने उनके लिए एक अर्बन वाटर रेजिलियंस प्लेटफॉर्म
तैयार किया था, जिसमें देयर वर मल्टीपल इंडिकेटर्स, जैसे कि फ्लड मैनेजमेंट वाला एक कंपोनेंट था, फिर एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो था वो इकोलॉजिकल हेल्थ था, बिकॉज काफी टाइम हमारी जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं तो उसका हम उसे मेजर नहीं कर पाते हैं कि इससे हमारी इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर जो हमारे पास वो मेजर्स ही नहीं होंगे, अगर जो वो क्या इम्पैक्ट है उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं होगा टू अंडरस्टैंड दैट, तो फिर हमारे जो डिसीजंस हैं दोज आर नॉट एविडेंस बेस्ड, या फिर दोज डिसीजंस डोंट हैव अ ग्राउंडिंग, एम्पिरिकल ग्राउंडिंग. सो दैट वाज द सेकंड की कंपोनेंट जो ecological health वाला था. थर्ड वाज डेफिनेटली द प्लानिंग मैकेनिज्म, कि हम यूएलबीज की कैपेसिटी कैसे बढ़ा पाएं, सो दैट हम लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, बिकॉज हमारी रिवर कैसी होनी चाहिए और हमारे रिवर के साथ हमारी कम्युनिटीज की एसोसिएशन किस टाइप की होनी चाहिए, वी आर द बेस्ट पीपल टू बी सेइंग दैट, एंड नॉट समबody from an external international body is definitely they can share their knowledge and expertise, there's no denial to that, but जो अभी का वर्किंग है और मैकेनिज्म है जहाँ पे एक्सटर्नल sort of agencies and foreign bodies sort of decide कि हमें किस तरीके से रिवर फ्रंट्स बनाने चाहिए, और आप अपने जो इंस्पिरेशन है वो सिर्फ ग्राफिकल इंस्पिरेशन लेते हैं डिजाइन प्रोसेस में, जैसे कि हम अलग अलग से जो सक्सेस प्रोजेक्ट, सो टू से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहे हैं, तो उससे सिर्फ जो हम इंस्पिरेशन लेते हैं वो काफी एक लिमिटेड वे है, या फिर दैट इज अ वेरी लिमिटेड अप्रोच to looking at the entire scenario. And finally, like हमारा जो last component था जो urban water resilience platform का, that was around grievances and aspirations, and काफी बार planning process में ऐसे होता है कि citizen grievances are captured at some level, जो उनके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर सिटी वाइड अगर जो कोई प्रॉब्लम्स कैप्चर कर रहे हैं, but citizens don't become active participants in the process of master planning. तो master planning process में वो कैसे citizen driven हो सके, तो that was the final sort of component of it. And it is currently operational at some level. The phase 1 of it has been completed and operational with the municipal corporation in Surat, and we are hoping कि हम उसे scale up करके पूरा product definitely operationalize कराएं, and it can be very beneficial to a lot of other cities, coastal cities as well as inland sort of cities across India. So that is by and large what I would say from my work as well as my experiences so far. Yeah, सुहास जी, आपके और अगर जो कोई questions या फिर suggestions थैंक यू, हो, बट yeah. मैं चाहूंगी कि why साबरमती रिवर फ्रंट हैज फेल्ड, इसके जवाब में 5-6 बुलेट पॉइंट्स जो मैंने चैट में लिखा है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आप यदि शेयर कर सके ईमेल पे आराम से तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल साबरमती क्योंकि या सुनिए, हाँ हाँ आई हैव स्टेड ऑन द एंटायर नर्मदा कोस्ट right right for wonderful in the villages, and so I know the community knowledge part of it, but to convince your heroes like Modi ji, who never listens to anyone, right we need to make people aware of the technical side, giving the examples of the failures and what are the points which were denied there. So बिल्कुल the same बिल्कुल mistake should not be repeated in that sense. And absolutely if you write and if you permit me, we would like to publish it in our monthly magazine called Andolan in Marathi. I'll translate for you. You can write sure to me in definitely English, Hindi, definitely anything. Bilkul, bilkul. I Thank you will very much. share in English and Marathi. I can Yeah, understand. I fine, can't fine. really speak Yeah. back, but I do understand Marathi as well. So No, yeah, you can definitely write in will be. English or in Hindi, which મને ગુજરાતી પણ આવડે છે Oh, પણ સરસ વાંચવાનું સરસ. નથી. Right, right.
So Sabarmati, just couple of quick reflections. So Sabarmati ke case mein, one thing which went wrong in the very conception of design was displacement of the communities from the river banks. That was the first level at which things went wrong. And हिंदी second, में बोलिए तो सब सुन पाएंगे, बिल्कुल समझ बिल्कुल. पाएंगे। सो जैसे ये रिवर फ्रंट बना था, तो उसके प्रपोजल में जितनी भी समुदाय जो रिवर्स के अलोंग रहते, नदी के अलोंग जो रहते थे, नदी किनारे जितनी कम्युनिटीज रहती थी, तो उन कम्युनिटीज का जो हाउसिंग है, उनकी लाइवलीहुड, उनका जो व्यवसाय है या फिर उनका जो डेली एसोसिएशन है रिवर के साथ, वो कभी मतलब इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ इन द प्लान ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट. एंड जब वो पूरा जो डिजाइन है वो ऑन ग्राउंड जब एग्जीक्यूट हुआ, तो काफी कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था. एंड इसके चलते क्या होता है कि पूरे सिटी का जो इकोनॉमिक पूरा जो सिस्टम है वो काफी मतलब शिफ्ट करता है. और उसके चलते जो आप नदी के किनारे जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे या फिर जिस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारे जो चेंज हैं वो काफी प्राइवेटाइजेशन ओरिएंटेड होते हैं. तो मे बी आपके होटल्स आना चालू करेंगे, आपके रिक्रिएशनल स्पेसेस आना चालू करेंगे, बट अब लोग ये तो सोशल इम्पैक्ट्स तो हम जानते हैं, टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो लोगों को दिखते नहीं है वो दिखाने चाहिए. Absolutely. So one thing is definitely, I mean, if you do not consider the 100-year flood levels at all in the design process, and yeah, I mean the entire stretch, जो पूरा river का जो stretch है, अगर जो आप उसे पूरा का पूरा अगर जो concretize करेंगे, तो उसके चलते definitely flooding के issues काफी multifold level पे बढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर. एंड वो जो है वो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं साबरमती के केस में भी. और जो सूरत के केस में भी आप देखेंगे, तो जिस तरीके से यूट्रोफिकेशन के प्रॉब्लम इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, तो रिवर का जो अपना एक सिस्टम होता है एज अ लिविंग एंटिटी, वो चीज पूरा खत्म हो जाता है. उसका जो एक नदी का जो खुद का अस्तित्व है वो ही पूरा इसेंशियली खत्म हो जाता है. और अगर जो हम इस इंडिया या फिर साउथ एशिया में देखेंगे, तो नदी किनारे लोग काफी कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि लोग नदी के आजू बाजू में बनाते नहीं थे, बट कभी भी ये इतना लंबा स्ट्रेच, जैसे कि आप वाराणसी में भी देखेंगे, तो आपको घाट वगैरह दिखेंगे, आपको टेम्पल्स दिखेंगे, बट दूसरे साइड देयर वाज ऑलवेज अ रूम, मतलब जो फ्लड प्लेन्स है, जहाँ पे नदी का जो मियांडर है, नदी जिस तरीके से अपना एक उसका एक खुद का ज्योमेट्री होता है, एक फ्लो होता है, तो वो जो फ्लो है वो हिस्टोरिकली हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया है. एटलीस्ट जितने भी हिस्टोरिकल सिटीज थे, दे हैड दिस वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग एट लार्ज. तो दैट इज समथिंग विच इज जो हमें आजकल के रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट और अप्रोचेस हैं, उसमें दैट इज समथिंग विच इज वेरी मिसिंग. तो आप सपोज जस्ट टू गिव अस एक और छोटा हम एग्जांपल देना चाहेंगे. जैसे आप वाराणसी में देखेंगे, तो इवन घाट के आपके जो स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स की हाइट एज वेल एज जो जिस लेवल पे वो ब्रेक होते हैं, मतलब आपके 5 स्टेप्स आएंगे, उसके बाद एक बड़ा से मे बी प्लेटफॉर्म आएगा, तो वो जो स्टेप्स की हाइट एज वेल एज जो वाटर लेवल्स हैं, वो सारे लूनर साइकिल्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं. तो आप जो डिजाइन प्रोसेस है वो सिर्फ आप मटेरियल के टर्म्स में या फिर एक पर्टिकुलर यूज के टर्म्स में उतने ही लेवल में आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो वो जो पहले के हमारे जो डिजाइन स्ट्रैटेजीज थे, वो मतलब फिजिकल रियलिटी से पूरे कॉस्मिक एंड लार्जर यूनिवर्सल फोर्सेस के लेवल पर वो डिजाइन को समझ के रिस्पॉन्ड करते थे.
सो दैट इज समथिंग, वो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है या परसेप्शन है वो हमें बदलने की जरूरत है। और मतलब जितने भी हम इस टाइप के प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो उसमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी और लार्जर होलिस्टिक व्यू पॉइंट को कंसिडर करके फिर हमें उसे अप्रोच करना चाहिए। Yeah, I Thank think you. yeah, Thank you. yeah, yeah. Yeah, I hope धन that answers. And if there are any more questions और कोई सवाल हो तो यस यस definitely हम सुवास्ता ही हमारे बहुत ही सीनियर मेंटर है और नर्मदा नदी पे मेधाताई पाटकर के साथ वो पिछले 20 सालों के ऊपर काम कर रही है। fantastic. Happy to connect with you, ma'am. Yeah. हमारे साथ अशोक पवार जी है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अशोक Right. पवार सर, आपको कुछ बात करनी है? यस, बोलिए। निखिल सर ने काफी अच्छा तरह से प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाया, काफी सारे अच्छे डायग्राम्स वगैरह दिख रहे थे। इसमें सिर्फ मुझे पूछना था कि ये जब जहाँ पे आपका रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का अगर काम हो रहा है तो उससे कुछ फ्लड लिफ्ट वगैरह आर्टिफिशियली बन रही है, और उस हिसाब से वो फ्लड लिफ्ट पे ओवरकम करने के लिए क्या प्रिकॉशंस या क्या कुछ डिजाइन या कुछ क्या प्लान बनाया गया है? सो फर्स्टली जो रिवर फ्रंट प्रपोजल है उसमें फ्लड रिलीफ की, अभी फ्लड रिलीफ या फ्लड मैनेजमेंट की बात इतनी स्ट्रांगली नहीं हुई है, एक्सेप्ट फॉर जो हमने आपको एम्बैंकमेंट्स दिखाए। तो वो एम्बैंकमेंट्स आर अश्विनी कुमार वाले एरिया में जो एम्बैंकमेंट्स बने हैं तो वो एक फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म है। और जैसे हमने बताया कि 2006 में जो सिटी में बाढ़ आई थी तो साउथ वेस्ट जोन में जो हमने दिखाया जो नदी जो अरेबियन सी से जो डोमस हमारा बीच है वो सी से भी काफी नजदीक है वो एरिया। और मतलब वहां पे रिवर भी काफी मतलब हायर लेवल पे थी, बट लोगों के घर वहां पे इम्पैक्ट नहीं हुए थे। मतलब स्पेसिफिकली जो डुमस वाला एरिया है वहां पे जो लोकल कम्युनिटीज रहती हैं तो उनके घर इम्पैक्ट नहीं हुए थे। एंड दैट वाज ऑन ग्राउंड, मेरे लिए दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन ऑन ग्राउंड के। एंड जब हमने वहां पे जाके काफी लोगों से बात किया जो मतलब वेटलैंड्स में से फिशेस का कल्टीवेशन कर रहे हैं, या फिर अभी तो मतलब काफी सारा प्रॉन्स एंड श्रिम्प फार्मिंग भी वहाँ पे होता है। तो जब हमने उन लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमें 2006 में जो ये वाटर स्ट्रीम्स थी जो हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा तो वो पूरा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम था। और एंड देयर वाज अ मैकेनिज्म कि ये जितना भी अगर जो रिवर स्वेल अप हो रहा है या फिर मतलब एक इमेजिन कैपेसिटी से ज्यादा अगर जो उसमें पानी आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाता था लो लाइंग एरियाज में। एंड वो लो लाइंग एरियाज में हमारे पॉन्ड्स थे, वेटलैंड्स थे, सो दोज वर नेचुरल रिजर्वॉयर्स एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज पॉइंट्स फॉर द एंटायर सिटी एट अ रीजनल लेवल। तो वो काफी मतलब एक हद तक एक नेचुरल रिस्पॉन्स और एक पूरा एक कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था पास्ट में। बट इन रीसेंट टाइम्स व्हाट हैज हैपेंड इज कि हमारा जो एयरपोर्ट है वो भी इट इज सिटिंग ऑन टू द एनक्रोच्ड वेटलैंड्स एज वेल। एंड मतलब आप अगर जो नेचुरल मतलब जैसे अर्बन डिजाइन में स्पॉन्ज सिटीज करके भी एक आइडिया के बारे में काफी बात होता है। तो जब हम इस टाइप की आइडियाज की बात करते हैं, अगर जो हम वो पानी को एब्जॉर्ब होने के लिए अगर जो जगह नहीं देंगे और हर एक चीज जैसे प्रमोद जी भी बता रहे थे कि हम कंक्रीटाइज कर रहे हैं
तो अगर जो हम वो एब्जॉर्प्शन का स्पेस नहीं देंगे तो इस टाइप के डिजास्टर्स आर इवन मोर लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। और फ्लडिंग जो है तो लाइक व्हेन सिवियरिटी ऑफ इट इंक्रीजेस, so during that time definitely it impacts human lives directly, but we are not really accounting for the consequences of depleting groundwater या फिर groundwater salinity के जो impacts हैं on the larger ecological system and like a prolonged drought kind of a scenario, तो वो हम अभी account ही नहीं करते हैं in the larger scheme of things. So I think in lines पे हमें definitely incorporate करना चाहिए ये सारी ideas while we are working on projects like river fronts or river transformations. Yeah. दूसरा एक सवाल था कि जैसे अभी रेगुलर रिवर अशोक जी आपका आवाज येलो लाइन की भी हेलो। यस, हाँ, जैसा कि अभी यहाँ पे रिवर रेगुलर रिवर में तो रेड लाइन, ब्लू लाइन और पिछले एक साल से महाराष्ट्र में येलो लाइन की भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की गई है। तो आपके यहाँ पे जहाँ पे ये रिवर और सी का जो जंक्शन है या जो डेल्टानिक एरिया के पहले जो प्लॉटिंग होता है, तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? रेड लाइन ब्लू लाइन तक ही सीमित रहती है कि ये बारिश में बारिश का हाई फ्लड के साथ साथ जो भी हाई टाइड रहता है तो उसका इफेक्ट लेके कुछ अलग टाइप की लाइंस वहाँ पे ड्रॉ की जाती है? सो अभी सूरत में आप देखेंगे तो सिटी वाइड लेवल पे हर जगह पे 2006 की मार्किंग्स की गई हैं, व्हिच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लड्स इन द लास्ट 30 इयर्स। सो वो मार्किंग्स आपको अलोंग जितने भी रिवर के आजू बाजू के हैबिटेशन हो गए प्लस सिटी वाइड आपको वो लेवल्स देखने मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो आप रिवर रेगुलेशन जोन की बात कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग व्हिच वी डोंट हैव। जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है CRZ, तो वो डेफिनेटली इज एप्लीकेबल, बट वी डू नॉट हैव रिवर रेगुलेशन जोन or strong bylaws around it as of yet, and I think वो nationwide that's how it is. So उस डोमेन में तो डेफिनेटली हमें काम करने की आगे जरूरत है, जहाँ पे हम डिफाइन करें zones around river as well. Yeah. विशाल जी आप कंटिन्यू कीजिए। Thank you. Yeah. बहुत ही बढ़िया निखिल सर। मेरे मन में एक सवाल है, आपने जो गोपी तालाब दिखाया हाँ, तो हाँ. वो गोपी तालाब का जैसे वो बिल्ड किया था 1806 कुछ तो भी आपने दिखाया, तो उसका जो रिसोर्स होगा मतलब कैचमेंट एरिया, तो वहां पर भी अभी तो कुछ बचा ही नहीं होगा ना? जो ये तालाब भरता होगा ऐसे तो कुछ रिसोर्सेस हो गए, तो उसके बारे में क्या है? मतलब वो पूरा ही ब्रेकआउट कर दिया वो सिस्टम सारा पुराना। बिल्कुल, मतलब आज तो वो सारे एरियाज, मतलब सिर्फ गोपी तालाब नहीं था, देयर वाज रानी तालाब एंड काफी सारे अलग अलग स्टेपवेल का भी सिस्टम हुआ करता था। तो उनका कैचमेंट तो डेफिनेटली मतलब अब नहीं रहा है। एंड स्पेसिफिकली जैसे हम स्पेसिफिकली लैंड और टोपोग्राफी के को चेंज कर रहे हैं थ्रू अर्बन इंटरवेंशंस, तो उससे वो कैचमेंट और भी फर्दर डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड जो हमारा स्पेसिफिकली इशू अराउंड स्टॉर्म वाटर के, जैसे हम बारिश का जो पानी है तो यूजुअली अभी का हमारा माइंडसेट कह लो या अभी का हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा होता है कि जैसे ही बारिश का पानी आए तो उससे हमें एलिमिनेट करना है सिटी में से, बट एलिमिनेशन इज नॉट द बेस्ट आइडिया। और जैसे प्रमोद जी भी बता रहे थे कि water rainfall levels are or the quantity is still the same, but the nature or frequency of it is something which is getting shifted. तो कभी कभी वो rainfall काफी ज्यादा एक short duration में भी आ जाता है। तो उस टाइप के जो issues हैं, तो in that case just creating
putting bigger storm water lines is not the solution, but आप वो rain water को कैसे city level and regional level पे आप manage करके कैसे ground water recharge कर रहे हैं, वो काफी एक important sort of idea है और strategy भी है which should be employed along with जो river front हम अभी बना रहे हैं. तो इसीलिए हमें सिर्फ river front नहीं but उसको एक urban water plan के स्वरूप में देखना काफी जरूरी है. एंड सर सेकंड क्वेश्चन, जो अपने स्टेप रिवर बोला, मोदी उसका नाम लिखा है, और जैसे तापी रिवर है वैसे दूसरा रिवर आपने जो कहा मिंडोला रिवर. हाँ जी, हाँ जी. तो वो तापी का सब मतलब ट्रिब्यूटरी है और सूरत में वो तापी से मिलता है. नहीं तो मतलब इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरी. आप पूरा जो कैचमेंट स्टडी करेंगे एंड इवेंचुअली वो एक इंडिपेंडेंट फ्लो भी है. कुछ कुछ जगह पे इंटरसेक्शंस थे बट अभी रिसेंटली मतलब जितने तापी शुद्धिकरण और बाकी सारे स्कीम्स में जो काफी कुछ काम हुआ है तो उसके चलते दोस कनेक्शंस आर नो मोर देयर. तो इवेंचुअली व्हाट हैज हैपेंड इज के वो रिवर के आजू बाजू में काफी सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं एंड काफी अनट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो है वो मिंडोला रिवर में अभी फिलहाल डिस्चार्ज होता है. बहुत ही बढ़िया सर, और वेरी वंडरफुल सेशन टुडे. और सच में धन्यवाद आपका और आपकी आपका इतना स्टडी और ये सभी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी रहता है. और कैसे कि इन द नेम ऑफ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारा क्या होता है कि नेचर को कंसिडर ही नहीं किया जाता. जैसे हमारे गांधी जी बापू जी कहते हैं कि नेचर के पास इतना कुछ है कि वो हर एक का नीड कंप्लीट कर सकता है, लेकिन हम नेचर को ग्रिड में, मतलब हमारा ग्रिड बढ़ रहा है, नॉट अ नीड अगर लिमिटेड रहे तो ये सारा पॉसिबल हो सकता है. तो इस तरीके से हमें अपने नेचर का जो भी है केयर करना चाहिए. हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी है वो कहते हैं कि कोई भी नदी है तो नदी बेसिन में अगर आपको काम करना है तो 4 पिलर्स इम्पोर्टेंट रहते हैं. जैसे कि वो कहते हैं हर बार कि पहला पिलर रहता है संत, यानी कि आप जैसे महानुभाव जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, एनी ऑफ पर्सन हु वर्क फॉर सोसाइटी, वो सारे संत है. दूसरा है शासन, गवर्नमेंट. और तीसरा वो कहते हैं कि महाजन, यानी कि जो इसमें सारा जो भी है फंडिंग देते हैं प्रोजेक्ट के लिए. और चौथा जो पिलर कहते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, वो पिलर है सोसाइटी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. तो ये चारों मिलके अगर कोई काम करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप अपने नदी के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में कितना सोचते हैं, उसको कैसे उसका जो खोया हुआ स्टेटस है वो फिर से मिला दे सकते हैं. तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हर वेबिनार में आप जैसे महानुभाव जिनका जमीन पे बहुत बड़ा कार्य है और वो अलग अलग कॉर्नर है हर एक का, तो इससे लोगों को एक आइडिया मिल जाती है और इससे लोग एक नई दिशा से काम करने को लग जाते हैं. ऐसा हमारा अनुभव. और ये वेबिनार है, ये तो हम हर बार कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज इज लिसनिंग एंड सेकंड इज लर्निंग. एंड ये जो भी हम सीखते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो हम माँ तापी के लिए इतना काम करने के हमें अपॉर्चुनिटी मिलते है, इसलिए हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि माँ तापी के लिए हमें ऐसा काम करने के लिए मिल रहा है. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पूरे टीम के तरफ से, आपने आपका कीमती समय यहाँ पर दिया. हम एक छोटी सी प्रार्थना से
आज का ये वेबिनार समअप करेंगे। मैं एक छोटी सी बिल्कुल प्रार्थना लेता हूँ। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का ये कार्य करने के लिए एंड इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए। या बिल्कुल, थैंक यू विशाल जी एंड या थैंक यू। और मैं तो एक सिर्फ यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन हमारी पूरी टीम है जो इसमें सपोर्ट करती है बैक एंड में, और उनके वजह से ये सब होता है। हम एक छोटी सी प्रार्थना से ये खत्म करते हैं, आज का वेबिनार समापन करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद अशोक जी।